Hi, good morning, everyone. Myself, C.A. Rahusreka from Dhanbad branch of CIRC of ICI. I would like to welcome you all to VCM of Decoding of Budget 2022, organized by GST of Indirect Taxes Committee and Direct Tax Committee of ICI, and hosted by Dhanbad branch of CIRC of ICI, co-hosted by Ranjhi and Jamshedpur branch of CIRC of ICI. I would like to welcome the chairman of all the three branches and chairman of DT and IDT committee of ICI for today's seminar. Now, I would like to request all people to kindly stand up for ICI motto song. सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्लं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते अस्मिन् शतः सर्वे तदूनाचर्य कश्चनान्यपि कश्चन एतद्वैता 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 Thank you, Pratik sir. Now I would like to request CA Pratik Ganeriwal sir, the chairman of Dhanbad branch of ICI, to welcome and address the then there is no next day for me. Yeah. Yeah, Pratik sir, please. Yeah. Very good morning to everyone. I express my heartiest thanks and welcome to the chairman of GST and Indirect Tax Committee and the chairman of Direct Tax Committee for giving their consent for organizing this webinar. I welcome CA Gyanchand Misra ji, Central Council member as program coordinator. I welcome the chairman and its managing committee members of Ranchi and Jamshedpur branch for co-hosting this webinar. I welcome today's eminent speaker, CA Manohar Goel ji and CA Avinash Gupta ji from Delhi. I welcome all the senior members, my colleagues and torchbearer of our professionals. Budget is always a hot cupcake program for all the ICI branches. I am very sure that the eminent speakers have also conducted many programs in Budget 2022 decoding. However, we chartered accountants needs to be updated as this budget I think there is a net problem for Pratik Ganeriwal sir. So we will move on further. Now I would like to request sir, 1 minute, sir. Yes, sir. As all of you are aware, our very beloved and esteemed sitting Central Council member, CA Sunilkumar Patel ji, breathed his last yesterday. Yes. It is a great loss for the institute. So in memory of his loss, that I should say, I don't have words, let me tell you. It's really a personal loss. We can say. Let us all rise in silence and pray that his soul, wherever it is, be calm, peace, and may the Lord Almighty give strength to his family and, of course, to the institute to bear his loss. We'll rise for 2 minutes, please.
थैंक यू। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सबको शक्ति दे। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। Pratik Ganirwal sir is back, and I think the problem is resolved. So I would like to ask Pratik Ganirwal to continue its welcome note. I express my heartiest thanks and welcome the chairman of GST and Indirect Tax Committee and the chairman of Direct Tax Committee for giving their consent for organizing this webinar. I welcome CA Gyanchand Misra ji, Central Council member, as program coordinator, and I welcome the chairman and its managing committee members of Ranchi and Jamshedpur branch for co-hosting this webinar. I welcome today's eminent speakers CA Manohar Goel and CA Avinash Gupta ji from Delhi. I welcome all the senior members, my colleagues and torchbearer of our profession. Budget is always a hot cupcake program for all the ICI branches. I am very sure that the eminent speakers have also conducted many programs in Budget 2022 decoding. However, we chartered accountants needs to be updated, as this budget will surely impact our past professional learning on direct and indirect taxes. In my opinion, we CA members should also participate in the pre and the post budget suggestions asked by the ICI, so that any relevant amendments or suggestions may be forwarded by ICI to Finance Ministry. So I request all the participants today, if they wish to make any suggestions relating to the budget, may please forward them to Dhanbad branch email ID dhanbad@ici.org. Decoding of budget is the topic of the day. Budget presented by our Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji on 1st February 2022 creates a lot of question in our mind, which needs to be answered by the eminent speakers. Many points relating to the budget may have direct perspective, which may have different perspectives, which will be cleared by the learned speakers today. I uh, I am very sure that all the participants will be highly benefited and will take away lots of learning. Thank you. Thank you, sir, for your welcome note. So I would now like to request the branch chairman of Ranchi branch to welcome address the audience. Thank you, Rahulji. A very warm good morning to all of you, and respected CA Rajendra Kumar P. Sir, very knowledgeable and chairman of Indirect Tax Committee. Respected Chandrasekhar Chittale Sir, chairman of Direct Tax Committee, very knowledgeable, and our first technical session speaker, CA Manohar Goel Sir, his clarity and clear thoughts about the subject would definitely benefit us. Our Central Council member, CA Gyanchand Misra Sir, always there to support branches, and respected chairman of both the branches, our committee members. On behalf of Direct and Indirect Tax Committee and all the three branches, I would like to welcome you all. When we all heard the budget live, we thought there is nothing in this budget for direct taxes and indirect taxes. Very few points are there. But when the detailed print came out, lots of provisions were changed, and it needs very minute changes were there, and it needs serious deliberations. So without taking much time and giving the maximum time to the speaker, I would like to welcome you all and thank you very much for giving us this opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now I would like to request the branch chairman of Jamshedpur branch to please address the audience. Thank you, CA Rahul Surekha ji. A very good morning to everyone. With immense pleasure, on behalf of Jamshedpur branch, I, CA Vikas Agarwal, branch chairman, welcomes CA Rajendra Kumar P. Sir, chairman, GST and Indirect Tax Committee, CA Chandrasekhar Chittale Sir, chairman, Direct Tax Committee. I would also like to welcome Central Council member, CA Gyan Mishra ji, who is always there to support all the branches
in Jharkhand. I'd also like to welcome eminent speaker for today's webinar, CA Manohar Goel ji and CA Avinash Gupta ji. I'd also like to welcome CA Pratik Ganirewal and his team from Dhanbad and CA Praveen Sharma ji and his team from Ranchi. I'd also like to welcome all respected senior members and all my fellow members and all the viewers of this webinar. Now, without taking much time, I'd like to conclude and thank you. Over to you, Rahul. Thank you, sir. Now I would like to call CA Gyan Chand Mishra, sir, Central Council member, for welcome address. Thank you, Rahul ji. Highly respected council colleague and Direct Tax Committee Chairman, CA Chandrasekhar Chitale ji. Respected Rajendra Kumar PG, Chairman in Direct Tax Committee. All the three chairmen of the branches, Dhanbad, Ranchi, and Jamshedpur, Praveen ji, Praveen Sharma ji, Pratik Ganirewal ji, and Vikas ji. Very learned speaker of today's session, CA Manohar Goel ji on indirect taxes, and CA Avinash Gupta ji in absentia on direct taxes. Very distinguished members of the fraternity, good morning to all of you. Friends, well said by our learned friend CA Rajendra Kumar ji, the fraternity has lost one of the wonderful leader and good friend. And really, it is very disheartening that the man who was really a magical personality and who was always available for the fraternity 24/7, he is no more with us today. I hope that the God Almighty gives him peace under his feet and family of Bhai comes out of this situation shortly. Today's program is on budget. Already the program is delayed. I always try to start the program in time. Budget, as well as spoken by few persons, that it has been very easy when it was being presented in the parliament, but subsequently lot of discussions, lot of pinpointed definitions, those need the extra attention of the members of the community. Friends, all the stakeholders of the society are eyeing our profession, and this is the time that we have to deliver at our best in terms of performance. For that, the institute is always committed for the skill development, and moreover, lot of things regarding the updation of the skill as well as regarding the IT modules we have just discussed in the council, and I hope certainly the council is going to deliver lot of softwares, lot of technical supports to each and every member of the fraternity to enhance their knowledge and skill, to hasten their skills, to best deliver to each and every stakeholder of the community. I will not take much time. I once again congratulate all the three branches for organizing such a wonderful program in the interest of the member, and hope they will keep on joining hands for the other programs also in coming time to benefit all the members at large. Thank you, dear chairman and dear committee members, for giving this opportunity to join this program. Thank you once again. Over to Rahul ji.
Thank you, Mishra sir, for your esteemed words. Now I would like to call CA Rajendra Kumar sir, Chairman of GST and IDT Committee, to say a few words. Thank you, Chairman sir. Very esteemed Chairman of the Direct Taxes Committee, my good friend C.A. Chandrasekhar Bhai Chitale, the newly elected Central Council member, and who has the ability to make friends at the drop of hat. My very good friend, I should call him now, C.A. Gyan Chandra Mishra ji, Thank you. the chairman of all the three branches who are here, esteemed speakers. Today is also a day which the state of Maharashtra celebrates. Today is the day of valor. Today is the day of victory. Today is the day of strength. Today is the day of might. And today is the day when the great Shivaji Maharaj was born. So I greet Chandrasekhar Chitaleji on this Shivaji Maharaj birth anniversary, being from the state of Maharashtra. All the esteemed members, at the outset, I congratulate you. When Dhanbad branch chairman sent an email to us, we said immediately, whenever there is knowledge sharing session, the GST and Indirect Taxes Committee will be there first to support the relevant branches in terms of resources and also finances as and when required. And that is what we are doing today. So thank you, in fact, for giving us an opportunity to do this program. In fact, in the 25th Council, this is the first program of the GST and Indirect Taxes Committee. And Gyan Chandra Mishra ji is the first coordinator of this program. Sir, congratulations on your debut, Gyan Chandra Mishra ji, on being the program director Thank you, Rajendra. We are of the first 25th Council on behalf of the GST and Indirect Taxes Committee. It's a great honor that you are our program director in the first program. Thank you very much. And also, my Chandrasekhar Bhai Chitale, congratulations to you also, being the first program. Both of us, both the committees are doing for the branches. We are for branches. Yes, budget is a document which has to be discussed, debated, deliberated. Not only direct taxes, not only indirect taxes. Maybe next time we can have economic aspects of the budget also. That will help you. And being a person who has passion for indirect taxes, I must say, this budget brings in a lot of amendments for the customs, basically, and maybe little amendments on GST. GST, I always say, it's a monthly budget. Monthly, when the GST Council meets, it is a budget, and you and I have to regularly go through it. Congratulations to all of you. Best wishes to the speakers and best wishes to the branch going forward. I also eagerly wait for the day when all of us will meet physically in your respective branches. I request Gyan Chandra Mishra ji to please take a lead to organize a national conference in this year of combining all the three branches of basically GST and Indirect Taxes Committee and also Direct Taxes Committee. Sir, I leave it to you, Gyan Chandra Mishra ji, and the first time. Sure, sir. It's my commitment that we will do one wonderful program. One wonderful national conference on direct taxes. Yes, direct and indirect taxes. I want sir, we will organize. And yes, there is a grant also from the committee. We will certainly give you a wonderful grant also. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you so much, sir. Now I would like to call CA Chitle Chandrasekhar Vasant sir, Chairman of Direct Tax Committee of ICI, to say a few words. Thank you, Rahul. Chairman of all the three branches who are co-hosting this particular national event, Pratik, Praveen and Vikas, Chairman Indirect and GST Taxes Committee, and my esteemed colleague, CA Rajendra Kumar P, my council colleague, CA Gyanchand Mishra, and all of you, ladies and gentlemen, who are attending this webinar. I compliment all the three branches for organizing this seminar. The chairman, Dhanbad branch, initially said, thank the committees for giving this particular opportunity. But I think the efforts were made by CA Gyanchand Mishra ji for compelling us to
organize and award this particular first event of this particular 25th council to all these three branches. And he has been relentlessly canvassing. And I'm seeing that the chairman said that he is relentlessly working for these three branches. But let me tell you, not only these three branches, for all the branches in the India, Gyanchand Mishraji is really taking great interest. And I'm sure that he will be organizing many more seminars. As informed by Rajendra Kumar, that yes, I would certainly be happy to participate at the national conference organized at these branches. And I'm sure that this process of knowledge sharing will continue. As far as this union budget is concerned, for direct taxes, if you look at, there are three types of changes. One is in case of the High Court and other court judgments, where they were not in line with the thought process of the Central Board of Direct Taxes, they have amended the law. And these amendments are clarificatory amendments. So to an extent, they won't be operative from the 1st April onwards, but maybe from the date on which the provision was there, they would be operative. So to that extent, these would be retrospective. So how to deal with these retrospective amendments? I'm sure the speaker will throw light on these particular amendments. And it is rather unfortunate that retrospective amendments are made. At this juncture, I recollect that in 2014, when the first budget was presented by the then Finance Minister, Honorable Advocate Arun Jaitley ji, he had in his budget speech stated that as a philosophy of this government, we will not make any retrospective amendments. And if you look at this budget, there are a number of retrospective amendments and all of them are against the assessee. So maybe we will have to think over it, ponder over it, and then come to the conclusion how to respond in coming years. Of course, we have to follow them, but wherever we have been caught napping because of these amendments, what is the way out? And in this year particularly, what will be the impact on interest relating to advance tax? The second category of amendments are rather administrative amendments, where they have changed various procedures. Change is order of the day. But then there are certain things like prima facie, faceless assessment and those things. Only last year they were the provisions were made, and this year again there has been substantial change. So one wonders whether those changes in earlier year were made without any thought process. So we believe that if the ICI is consulted before drafting these procedural changes, I'm sure that better law will emerge. But this has to be conveyed. We are making efforts to convey them, but nationwide efforts are required. And I'm sure with Gyanchand Mishraji in council, easy for him to visit CBDT in Delhi. I think these efforts would be much more vigorously carried out by him and our team. And third type of changes are very insignificant. Some tinkering has been made. I think what stakeholders expect is a long-term policy, and in long-term policy, such tinkering of law is not expected. Whatever you want to table, you can do it at one go. Even in case of direct taxes, where year span is in the focus, nothing wrong that whatever proposals the government wants to make on first day of January or first week of January, they table its proposals along with the wordings, the change in the sections. Maybe profession and other stakeholders can deliberate and suggest the government if there is any anomaly, they also can suggest. Because you will recollect last year only on reconstitution of partnership firms and AOPs, they have made substantial change in law, and that change in law leaves many questions unanswered. Like supposing there is no asset left after whatever assets are there with the partnership, all are taken over by the retiring partners, then how to adjust the excess on which the tax has been paid? So number of issues are there which we have informed the government. So proactively government has to take stance on it, and with help of all branches, we will certainly make representations and ensure that the life of stakeholders is seamless. As far as post-budget memorandum is concerned, now the committees will be constituted in the coming week, and we are sure we will be submitting or drafting post-budget memorandum, and along with President, Vice President, we will be submitting it to the Finance Ministry. In post-budget memorandum, I would appeal, like Chairman Dhanbad branch has appealed,
that yes, on direct taxes and indirect taxes, whatever suggestions you have, you can certainly make to the branches, and branches can in turn through Gyanchan Mishra ji send it to the council, where we will consider in different committees. However, our focus should not be limited to suggestion only on direct and indirect taxes. There are other compartments also which are within the finance ministry, like corporate laws relating to company, relating to LLP. If you have any suggestions, those also you can make. Laws relating to banking and finance, which is our forte, there also you can make suggestions. And if there are any other commercial aspects which we feel that government should take up, those are also part of our understanding, because now we are digressing the profession not only with attest function, not only with taxation, but we are rendering services on many facets of the business, commerce, trade, etc. So wherever we are rendering services, we need to equip our profession and also to facilitate the functioning of the stakeholder. So please apply your mind. I would recommend all the branches that you may organize meetings at your respective branches. Maybe if time permits, Mishra ji also can join, and you can deliberate all these aspects and come out with post-budget memorandum that will certainly help the profession, help you understanding various facets. And if there are any hurdles, we will be able to bring them out to the government, and government will be able to respond. I once again compliment the branches and Gyanchan Bhai for organizing this wonderful seminar. I have seen profile of the faculty. They are also very knowledgeable, and they would be giving much needed inputs. And I really compliment you, because there is passion of organizing budget meetings on the eve of the budget presentation on the next day. But then, friends, you will appreciate that the budget has not been read to that depth. So you are organizing after 10-12 days. That is the appropriate way, because all the niceties can be brought about by the speakers who have read this budget thoroughly well, who have addressed, who have attended many seminars, and being armed with those this background and sufficient reservoir, I think the best can come today. I am also eagerly awaiting to listen to the faculties, and I compliment faculties for agreeing to join this particular national webinar organized by Indirect and Direct Tax Committee. Thank you. Thank you, sir, for your esteemed words. Now it's time for introduction of the esteemed speaker, that is CA Manohar Goel, sir. Now I would like to request Rajiv Branch to read the profile of the speaker. Thank you, Rahul ji. It gives me immense pleasure to read the speaker's profile. Mr. Manohar Goel, partner of the firm, acquired membership of the Institute of Chartered Accountants of India in the year 1999. During his 18 years of post-qualification tenure, Mr. Goel has worked for many reputed multinational companies such as Lee Cooper, Ingersoll, Genpact, and Kocher and Company, one of the largest leading corporate law firm, and has handled extremely complex assignments. Mr. Goel has in-depth knowledge and strong hold in the field of indirect taxation. Mr. Goel is presently handling various consultancy assignments for many reputed Indian and multinational companies. Mr. Goel has authored various articles and books on different topics of indirect taxes. His latest books on the subject is GST Unlocked, Concise, Ready Reckoner. Mr. Goel is also a skilled trainer and speaker on indirect taxes. He has addressed more than 200 workshops and seminars organized by different trade and professional associations. He is also an approved faculty on GST listed by the Indirect Committee of Institute of Chartered Accountants of India. We welcome you, sir. Thank you, sir, for such a wonderful introduction of the esteemed speaker, C. Manohar Goel. And now I would like to call upon our esteemed speaker, C. Manohar Goel, sir, to address the audience. Over to you, sir. Thank you so much, Rahul Surekha ji. The present August gathering, Chairman Indirect Taxes Committee, Chairman Direct Tax Committee, respected Council Member C. Gyanchan Mishra ji, Chairman of all three branches who are present here, MOC, and the other senior and respected colleagues. So at the outset, my sincere thanks to the organizing committee, both the committees, direct tax and indirect tax of the Institute of Chartered Accountants of India, and my elder brother, C.A. Gyanchand Mishra ji, along with all the branches
for not only organizing this wonderful event, but also considering me as one of the faculty. So I'm honored and delighted to be here. And I'm really delighted that all three branches I have already been in touch with, and at one of the other occasions, I've got the opportunity to be amongst the branch members and share my thoughts on indirect taxes. So it's a privilege and honor to be here on this dais once again and share my thoughts on the changes recommended by the Finance Bill 2022 by the Finance Minister. So as we've been discussing rightly, that the Finance Minister's speech spoke very less about the changes proposed in both direct taxes as well as indirect taxes. But when we read through the fine prints of the budget proposals, we all got to know that while it was not spoken in the parliament, but there are so many unsaid proposals or changes, and they are fundamental in nature. So in today's session, whatever 1.5 hours that we are going to spend together, I think we are not only going to talk about the changes proposed through the budget, but also the kind of mindset and the trajectory through which the government wants the country to move ahead. So to begin with, before we come to the clause by clause discussion on the changes proposed, I think the first thing we should do is read about the particular paragraph in the budget speech, which was read out by the finance minister, just to understand the focus and the viewpoint of the government as far as the indirect taxes are concerned. So I'll take a few minutes to read out with you the budget speech, and then we will move ahead with the changes which have been proposed to this budget. So I'll quickly take you through. I think my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yeah, just confirm. Okay, great. Okay, so I have taken out the relevant extracts of the budget speech with paragraph number 139. So it talks about the indirect taxes remarkable progress in GST. It says GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. So obviously it's a law which shows the strength of the cooperative federalism, where through one single law, the government has tried to kind of not only collect but administer the taxation structure where all the states come together along with the union territories and the central government and do the administration successfully as far as GST is concerned. So while aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. So there are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has endangered significantly better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt the changes, but enthusiastically contributed to the cause by paying taxes. So this was the opening remark given by the Honorable Finance Minister. Then we come to the specific paragraphs where they have given a particular emphasis on certain areas of improvement, one of them being the special economic zones. So it says in part A of my speech, I've referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. So which means there is a drastic change coming up in the SEZ law. So this will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. So this was one major announcement, that the law pertaining to the special economic zones needs an overhaul.
And we, especially the people who've been dealing with the SEZ related issues, would acknowledge that yes, it is the need of the hour that the SEZ law has to be overhauled. And I personally feel that with this new changed law, whenever it comes up, there'll be a great opportunity for the professionals who are willing to work in the indirect tax regime. So the SEZ law is one of those laws which are going to give a lot of professional opportunities for the fraternity. Now, clause 141 talks about the emphasis on certain resolutions of the legacy issues as far as custom laws are concerned. So it says customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formations have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLIs and phased manufacturing plans. My proposals on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. So this is very important. I think we all need to concentrate about these two paragraphs which are following now. So 142 says National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. So we need to mark these words. The policy which was laid down way back in 2016 has an aim of doubling the capital goods production capacity inside the country by at least double. So this would create employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades in some cases, have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather, footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. So this is very, very important statement that for last 3 decades, there have been certain exemptions or lower duties, import duties, which were hindering the performance of the domestic market because of the incentives, exemptions, etc., which were given as a legacy for last 3 decades to these various capital goods under these sectors like power, fertilizer, textile, leather, footwear, food processing, and fertilizers, etc. So these exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in the areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. So what they are trying to emphasize now is that the exemptions and the incentives which are given to many of the imported items in the capital goods category, they feel that now is the time to revise all those exemptions and in certain cases to make them such that the Indian manufacturing industry is not stuck because of the incentives given to the import segment. So it says accordingly, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. So the first major announcement is that most of these items which were under the exempted category without having any import duties will now come under the moderate tariff of 7.5%, making the Indian manufacturers getting a level playing field. Now, a few exemptions are being introduced on imports like specialized castings, ball screw, linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. Review of custom exemptions and tariff simplification. So this is the last leg of the speech that I'm going to read out. And that again is not less significant than the earlier ones. So what they've said in paragraph number 146 of the speech is in the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing, and as a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out.
These include exemptions on certain agricultural produce, chemical, fabrics, medical devices, and drugs and medicines for which sufficient domestic capacity exists. So this is like a list of 350 odd items which are under the exemption category, which will be phased out, which means that the imports are going to be expensive, and which in other words means that we have a sufficient domestic capacity to cater to these requirements, and hence there is a kind of bar being put on the easier and cheaper imports of these 350 odd items. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. So this comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India, and providing concessional duties or raw material that go into manufacturing of immediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. So what I intended by reading out this, the relevant paragraphs of the speech by the Honorable Finance Minister was, I perceive at least 2-3 messages which are loud and clear to our community. Number one, the SEZ law is going to have an overhaul, and according to me, it will definitely bring out a lot of professional opportunities for the fraternity. So that's one thing which I take out. The second one is the government is very clear about increasing the domestic manufacturing facilities. Domestic manufacturing, Make in India concept, Atmanirbhar Bharat are synonyms to each other, and this resolve is shown by making certain fundamental changes in the laws which have been, the provisions which have been there for long enough. The way they've proposed to phase out 350 items from the exemption list as far as the import duties are concerned, and then imposing certain import duties on certain items of the industries which make the Indian manufacturers not at the level playing field when there are exemptions at the time of importing such capital goods into India. So there are 3 main features of this indirect tax budget speech. Number 1, overhauling in the SEZ laws. Number 2, certain changes in the import laws such that the domestic manufacturing is going to get a push. And third, the government's resolve in increasing the local manufacturing, so that again, no manufacturing unit can be established or can run without the help and support of our professionals. So it means a great opportunity lying ahead for all of us. So these are the 3 messages that I could take from the speech, but I'm sure that the participants would have taken many more messages from the speech and set the stage for the years to come. So it is not only about the changes which have been proposed in the tax laws, which are going to make impact to our day-to-day practices, but we also need to be mindful as to what the government is thinking. And that's a message through the budget where we all have to take participation and make sure that whatever is on the plate in the coming years ahead, we all should participate and take our pie from that segment as well. So with this, now I would like to avert to the main section of our today's session, which is the proposed changes in the GST law. So I will now stop sharing the screen, and I'll take out another screen, which is the proposed changes in the budget. And we will read out the relevant clauses of the Finance Act only. So I hope my screen now is visible as far as the finance bill is concerned, the CGST Act amendments. Yes. Okay, thank you. So, the proposed changes in the budget, as we reiterate at the cost of being repetitious, is that none of these changes were spoken in the Parliament by the Honorable Finance Minister. But let me tell you that there are some fundamental and very, very important changes which have been proposed to be brought into this law, and which will kind of, in many ways, change the way a taxpayer used to operate and change the way a consultant used to work in tandem with the taxpayers. So let's focus on all the changes one by one and make sure that we, at the end of this session, are able
to understand as to what is the intent behind making these changes. While there are several changes, but the bottom of these changes remains only one thing, which is more compliance-driven mechanism being provided, and wherever the government has been feeling that there are certain gaps, they've tried to fill them up. But by doing it, I think at the end we all will realize that they are trying to make the laws one-sided and obviously tilted in favor of the government. So that again, I would say that is my personal assumption based on the way these changes have been proposed, and we will conclude when the session is over. So the first change which has been proposed in the backbone section of the CGST Act, which we all know is section 16, and section 16 is nothing but the section which provides the eligibility to a taxpayer to claim input tax credit of all the inward supplies of goods and services taken by the taxpayers. So the first change says in the CGST Act 2017, in section 16, the number one change is in subsection 2, clause 1, it says after clause B, the following clause shall be inserted. BA, the new clause under subsection 16, section 16, subsection 2, the first change is after clause B, there is additional clause being inserted, which is called BA. And what it says is the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted. So हम सबको समझना पड़ेगा कि ये प्रपोज चेंज क्या है, इससे क्या चेंज होने वाला है. तो एक बार के लिए रिकॉल करते हैं. सेक्शन 16 जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी की बात करता है. सेक्शन 16(2) में वो कंडीशंस हैं या वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको कंप्लाई करनी पड़ती हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए. 4 कंडीशंस हम सबको आई थिंक बाय हार्ट, जो लोग भी जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं उनको याद होंगी कि वो 4 क्या कंडीशंस होती हैं. गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव हो जानी चाहिए, आपके पास इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए और ड्यू टैक्स पे कर दिया होना चाहिए. ये 4 कंडीशंस डे 1 से लॉ में हैं. उसके अलावा जो एक नया इंसर्शन इस लॉ में प्रपोज किया है वो कहता है कि डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन. मतलब जो आपके सप्लायर ने जो भी रिटर्न फाइल किया है 38 में, यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न फाइल हुई है GSTR 1 जिसको सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं, उसमें अब जो हमारे पास इनवर्ड स्टेटमेंट आएगा 37 में आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि GSTR 1 की बात है, 38 में उसका इनवर्ड यानी कि जिसको आज की डेट में हम GSTR 2A और 2B नाम के फॉर्म बोलते हैं, उसमें एक नया फीचर प्रपोज किया है. वो नया फीचर ये है कि GSTR 2A या 2B में 2 अलग अलग कैटेगरीज में इनपुट्स दिखाई देंगे. एक वो जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि टेक्निकली आप उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते ऑल्दो दे आर अपीयरिंग इन योर GSTR 2A, एंड द अदर वन विल बी ओपन फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो ये BA क्लॉज उस बात को सिग्निफाई करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ तभी मिलेगा जब आपका ITC आपके GSTR 2A में रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में फॉल नहीं करता है. सो इट मींस कि प्रोसीजरल चेंज है. सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो 2A आएगा उसमें अब रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी, और जो भी रिस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके रीजंस हम नीचे के चेंजेस में पढ़ेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. बट अगर आपके 2A में एक रिस्ट्रिक्टेड इनपुट दिखाई दे रहा है तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यूली इंसर्टेड क्लॉज you will not be able to avail input tax credit of those inputs जो कि आपने अवेल किए हैं, आपने लिए हैं गुड्स या सर्विसेज, बट उनके ऊपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज वो आपके GSTR 2A में रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट चेंज. आप इसको याद रखिएगा जब हम सेक्शन 37, 38, 39 पढ़ेंगे तो इसको कोरिलेट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. 16 में ही दूसरा चेंज है इन क्लॉज C फॉर द वर्ड्स, फिगर्स एंड लेटर्स और सेक्शन 43A शैल बी ओमिटेड. इसका क्या रीजन है? ये एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज है क्योंकि सेक्शन 43A को ही अब ओमिट करने के लिए प्रपोज किया गया है, तो नेचुरली उसका रेलेवेंस रेफरेंस जहां भी दूसरे सेक्शंस में है वहां डिलीट हो जाता है.
ये कॉन्सिक्वेंशियल चेंज है, इसको हम 43A में देखेंगे। उसके बाद एक और चेंज है इन सबसेक्शन 4, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. So it talks about in subsection 4 for the words and figures, due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, the words 30th day of November shall be substituted. Now this one change will reflect at least in the next 3, 4 or maybe 5 other changes as well, but the significance of this change is similar. तो ये क्या बोलता है, अगर आपको याद होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की आखिरी तारीख लॉ में ओरिजिनली जो प्रोवाइडेड है वो है सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, विच टेक्निकली मींस 20th of October. तो हम लोग पहले ये समझते थे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड किसी भी इनवर्ड सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट जो लॉ में प्रोवाइडेड थी, दैट वाज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, which technically means 20th of October. Now they have changed the words. Rather than the month of September, it will now be replaced by the words 30th day of November. So which means कि अब ये due date extend कर दी गई है, लेकिन technically इसको सिर्फ parallel draw नहीं कर सकते हैं कि सितंबर की रिटर्न जो 20 अक्टूबर को फाइल होती थी, अब नवंबर की रिटर्न 20 दिसंबर तक फाइल होगी, तो इसका मतलब है आप 20 दिसंबर तक के इनपुट ले सकते हैं. No. I think what they have proposed now is the deadline of a particular date. So anything which you need to avail as far as particular financial year is concerned, you can only do it till the 30th November of the following financial year, which means that if you are filing all your returns within time, then practically 20th November, which is the due date for filing of your return for the month of October, will be the last opportunity on which you can take the credit, unless you decide to delay your returns and file them before 30th of November. Then in that case, it is possible that by 30th of November, by filing any of the previous returns like September or October, you can still avail the benefit, but not for the month of November. So technically, if I understand it correctly, then there is no mean through which you can take input tax credit for the in the return which is for the month of November, because nobody will be in a position to file the return for the month of November on 30th of November. It can only be the latest return of October of the following financial year through which you can claim your input taxes which pertain to the previous financial year. So this is a very significant change where they have not now given the option dependent on the due date of filing of the return, but they've given a fixed date which is 30th of November. So any return which you are filing on or before 30th November of the following financial year, you will be entitled to claim input tax credit pertaining to the previous financial year and not beyond that. So that's the change proposed in section 16. Now coming to section 29. So 29 pertains to registration. It says the first change proposed is in clause B for the words return for 3 consecutive tax periods, the words the return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return shall be substituted. So this clause is basically for the composition dealers, where they have said कि financial year खत्म होने के बाद जो return file होनी है, अगर वो रिटर्न आप 3 महीने से ज्यादा लेट तक भी फाइल नहीं करते हो उसकी ड्यू डेट से, तो आपका रजिस्ट्रेशन सू मोटो कैंसिल हो सकता है. दूसरा चेंज जो सेक्शन 29 में है, इन क्लॉज सी फॉर द वर्ड्स अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months, द वर्ड सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो ओरिजिनली लॉ में लिखा था कि फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स अदर देन द कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, इफ यू डोंट फाइल योर रिटर्न फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 6 months, your registration will be liable to be cancelled suo moto at the intent of the tax officer. But now they have changed the words from 6 months to such continuous tax period as will be prescribed. So they have given this delegation to the council to issue a suitable timeline, which could remain 6 months, which could be more than 6 months, or which could be even less than 6 months, will depend on what timeline is proposed. But as of now, they've given the flexibility in the law, wherein now the 6 months period, which was a fixed period given in the law itself, has been replaced with the words
continuous tax period as may be prescribed. तो ये सेक्शन 29 के दो चेंजेस हैं, पहला कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए और दूसरा नॉर्मल डीलर्स के लिए, जिसमें प्रपोज किया है कि 6 महीने के टाइम को suitably amend किया जा सकता है through notifications. Next proposed change is in section 34 of the CGST Act. In subsection 2, for the word September, the words the 30th day of November shall be substituted. तो याद कीजिए सेक्शन 16 में जो चेंज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए टाइमलाइन का दिया गया है, कोरेस्पॉन्डिंगली सेक्शन 34 जो कि क्रेडिट नोट्स का सेक्शन है, वहां पे भी यही चेंज कर दिया है. तो जो पहले क्रेडिट नोट्स आप सितंबर तक दे सकते थे, वो अब 30th नवंबर तक आपके पास एलिजिबिलिटी है टू इशू दोस क्रेडिट नोट्स. Likewise, in section 37, now is the bunch of sections which is going to propose the fundamental change of in this law. So I will request the attention of all the participants to this bunch of 3, 4, 5 sections which have been overhauled in the section in the law, and to bring in a change, or I would say to bring about curtains on the previous era. और मुझे I think this is something which we all should know कि 1 जुलाई 2017 को जिस विजन के साथ इस लॉ को लाया गया था, उसका बैकबोन था द मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड द काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन द सप्लायर्स एंड द बायर्स. अगर हम ओरिजिनल सेक्शंस को देखेंगे, सेक्शन 37, 38, 39, ये 3 सेक्शंस क्लब करते थे सप्लायर, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से वापस कम्युनिकेशन टू सप्लायर एंड देन अ कंफर्मेटरी मैसेज. सो ये डे 1 से प्रपोज था बट कभी भी हुआ नहीं. GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 इसका ओरिजिनल प्रपोजल था जो हमने सबसे पहले GST एक्ट देखा 2017 में. उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, बट अल्टीमेटली इन दिस बजट दे हैव proposed to bring down the curtains to this provision, probably thinking that this will not see the light of the day. So ये हम सब के लिए एक हिस्टोरिक चेंज होगा, एक ऐसा प्रोविजन जो 4 साल से भी ज्यादा टाइम तक लॉ में रहा लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और फाइनली वी हैव टू नाउ बिड एन ADIU टू दिस प्रोविजन. सो ये क्या बोलता है, सेक्शन 37, 38 और 39 को अगर क्लब्ड वे में देखेंगे तो ये कहता है कि 2-वे कम्युनिकेशन जो प्रपोज्ड था ओरिजिनल लॉ में, उसको डू अवे कर दिया गया है. सो अब हम इस पूरे प्रोविजन को पढ़ते हैं, इसमें 2 बेसिक चीजें निकल के आएंगी. एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर एक फर्दर लेवल की रेस्ट्रिक्शंस है जो यहाँ प्रपोज की है, और दूसरा जो 2-वे कम्युनिकेशन का ओरिजिनल प्रपोजल था उसको खत्म कर दिया गया है. सो विद दिस इंटेंट वी विल रीड आउट दीज सेक्शंस. तो 37 व्हिच इज corresponding to GSTR 1, it is easily understandable when we say that 37 provides for the implementation of GSTR 1, how it operates. So ये कहता है 37 के subsection 1 में एक change है, that's after the word shall furnish electronically, the words subject to such conditions and restrictions and shall be inserted. मतलब number 1 change क्या हो गया, 37 में एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब की जाती हैं, की जा सकती हैं, जिनको कि आपको GSTR 1 फाइल करते वक्त कंप्लाई करना होगा. That's first change. The second one is for the word shall be communicated to the recipient of the said suppliers within such time and in such manner as may be prescribed. The words shall subject to such conditions and restrictions within such time and in such manner as may be prescribed be communicated to the recipient of said supplies shall be substituted. तो ये एक और चेंज है सेक्शन 37 में, जिसका मतलब वही है कि कुछ डेलीगेशन थ्रू नोटिफिकेशंस, थ्रू रूल्स और दिया जाएगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जिसके हिसाब से ये कम्युनिकेशन जो सप्लायर अपने GSTR 1 में इंफॉर्मेशन देगा वो रेसिपिएंट को अपने GSTR 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करेंगी. उसमें भी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसका डेलीगेशन भी इस लॉ में प्रपोज किया है. एंड आई थिंक ऑल दीज डेलीगेशंस विल बी ब्रॉट आउट थ्रू द रूल्स और थ्रू द नोटिफिकेशंस. तीसरा चेंज है द फर्स्ट प्रोविजो शैल बी ओमिटेड. इसका जो पहला प्रोविजो है 37(1) का, उसको ओमिट कर दिया जाएगा. उसके बाद इन द सेकंड प्रोविजो द वर्ड्स provided further that the words provided that shall be substituted. तो जो सेकंड और थर्ड चेंज है
फर्स्ट प्रोविजो हटाने के बाद वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हैं, जहां पे वर्डिंग इसलिए चेंज की गई है क्योंकि प्रोविजो का नंबर चेंज हो रहा है. So the important message is that the first proviso will be omitted, and we will understand what this proviso is and what is exactly being omitted. उसके बाद कहता है subsection 2 of 37 will be omitted. फिर कहता है in subsection 3 the words and figures and which have remained unmatched under section 42 or section 43 shall be omitted. तो ये दो वर्ड्स क्यों यूज कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 42 और 43 सेक्शन को ही ओमिट कर दिया गया है, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज है. In the first proviso, अगला जो change है, in the first proviso for the words and figures furnishing of the return under section 39 for the month of September, the words 30th day of November shall be substituted. Again the same change. आपको कोई भी पिछले साल से related changes अपने GSTR 1 में करने हैं, तो पहले आप सितंबर मंथ की जो रिटर्न की ड्यू डेट होती थी 20 अक्टूबर तब तक कर सकते थे, अब आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं. Again, not for the return for the month of November. It is about 30th November तक कर सकते हैं. उसके बाद अगला change after subsection 3, the following subsections shall be inserted. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें बहुत ध्यान से रीड आउट करना है. So it says another subsection 4 will be inserted. So ये क्या बोलता है, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 for a tax period if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him. So we all know previously there used to be situations where for a particular month the GSTR 1 is not filed, but for a subsequent month the GSTR 1 is filed and the system was allowing it. So was the law. But now the law has given this restriction that GSTR 1 for a particular month cannot be filed unless the same has been filed for all the previous tax periods. तो आप पिछले महीने को skip करके directly अगले महीने पे नहीं आ सकते हैं. Provided that the government may, on the recommendations of the council by notification subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under subsection 1, even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods. So this is an exception where the government can, through a notification, bring about a certain class of persons or a taxpayer, give the liberty of not filing their previous periods GSTR 1s, but still allow them to file the GSTR 1 for the next periods. But this is only an exception which can be brought about specifically by the council, and generally for all the general taxpayers, you cannot file your GSTR 1 for a month unless you file all the GSTR 1s which are liable to be filed of the previous periods. So now another change in now section 38. अभी हमने देखा 37 मतलब GSTR 1 से pertaining changes. अब हम बात करेंगे GSTR 2 से related या 2A से related changes. For section 38 of the CGST Act, the following sections shall be substituted. So here is the overhauling. Section 38 को इन्होंने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है और उसकी जगह पे नया सेक्शन 38 इंट्रोड्यूस किया है, और इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये क्या प्रोविजंस है. So it says 38 का subsection 1, the details of outward supplies furnished by the registered person under subsection 1 of 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and manner within such time and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. तो यहाँ पे सिर्फ conditions and restrictions के अलावा ये almost same section है जिसमें हम बात करते हैं कि एक 2A या 2B नाम का एक auto-generated document बनेगा based on your suppliers filing their GSTR 1 as per section 37 subsection 1. तो यहाँ तक जो सब clause 1 है या subsection 1 है वो majorly वही है, सिर्फ उसमें conditions and restrictions के word को replace किया गया है. But जो major change है, जो fundamental change है, that comes up in subsection 2. So 38 subsection 2 says the auto-generated statement under subsection 1 shall consist of A, details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient. So your GSTR 2A or GSTR 2B will now be split into two parts. आप याद कीजिए जब हम सेक्शन 16 के चेंज के बारे में बात कर रहे थे, जहां 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज BA
एक नया क्लॉज ऐड किया है, उसमें कहा है, एक रिस्ट्रिक्शन डाली है कि आपको जहां पे रिस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाई देगा 2A या 2B में, वो आप अवेल नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे दिखाई देगा, वो आपको 32 का सबसेक्शन 2 डिस्क्राइब करता है। 32 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि आपका जीएसटी 2A कैसा दिखाई देगा। उसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा, आप दोबारा पढ़िए, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1, मतलब 38 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपके पास एक 2A बनेगा या 2B बनेगा, और वो 2A या 2B के दो पार्ट होंगे, शैल कंसिस्ट ऑफ A एंड B। ए में क्या बोलता है, द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट टू व्हिच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मे बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मतलब ये वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आप ले सकते हैं, डिपार्टमेंट को इसमें कोई ऑब्जेक्शन प्राइमा फेसी ही नहीं लगता है। नाउ कम्स द next change, which is clause B of subsection 2 of section 38. ये कहता है, details of supplies in respect of which such credits cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient on account of the details of the said supplier being furnished under subsection 1 of 37. मतलब ये वो दूसरा सेगमेंट होगा जिसमें फुल्ली या पार्शली इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाएगी, कैसे कैसे केसेस में लगाई जाएगी, ये लिस्ट इन्होंने नीचे दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको जानना। क्लॉज नंबर 1 कहता है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि कोई एक नया रजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसका एक सर्टेन पीरियड ऐसा हो सकता है जिसमें उसने जो रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल की है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ना दिया जाए। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि एक नया रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक के 4 साल के एक्सपीरियंस में द गवर्नमेंट हैज कम अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ केसेस वेयर अ टैक्स पेयर वुड टेक अ न्यू रजिस्ट्रेशन, फाइल जीएसटीआर 1 रिटर्न्स फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, will not even file GSTR 3B, or if at all he files, he does not deposit the due taxes and then runs away. So maybe this is one attempt by the government where they are trying to restrict your input tax credit based on the history of a taxpayer who has newly taken up a registration. So this is clause number 1, which says that by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed. So it means this is a new condition coming up, that where you are dealing with a new supplier who has taken a recently new GST registration, there might be a restriction. और अभी ये propose नहीं हुआ है कि कौन सी restriction होगी, कितने period की होगी, but I am assuming कि इसका idea यही है कि एक नया GST registrant जब अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तो पहले 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने जो भी टाइमलाइन डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, वहां तक की उसकी GSTR 1 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो आने वाले टाइम में अगले महीनों में जाके एलिजिबल होगा। दिस इज व्हाट आई कुड मेक आउट ऑफ दिस चेंज। सो दिस इज वन थिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली न्यू टू द लॉ, और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी होगी, वी ऑल हैव टू सी। क्लॉज नंबर 2, by any registered person who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed. The second clause is कि जहां कहीं आपके सप्लायर ने टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया है और वो डिफॉल्ट एक लिमिटेड टाइम तक कंटिन्यू करता रहा है, उस दौरान भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रेस्ट्रिक्शन होगा। यानी कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया और एक सर्टेन पीरियड तक पे नहीं किया तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दिखाई देगा, जिसका मतलब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। Third is, by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said subsection during such period as may be prescribed exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed. Simple words में, एक आदमी ने आपको माल बेचा या सर्विसेज सप्लाई किए, सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न जो कि 37(1) में होती है, जिसको हम GSTR 1 बोलते हैं, GSTR 1 में दिखाया उसकी सप्लाईज के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है 5 लाख रुपए की, लेकिन उसने GSTR 3B में अपना टैक्स पेमेंट किया है 3 लाख रुपए का। तो उस केस में भी अगर ये लिमिट एक प्रेस्क्राइब की जाएगी कि अगर फर्क 2000 रुपए का है तो शायद रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बट अगर फर्क 1 लाख से ज्यादा का है तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि आपको उस सप्लायर के इनपुट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे जिसने GSTR 1 में अपनी आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा दिखाई है और GSTR 3B में
कॉन्सिक्वेंटली उसने अपनी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली पे नहीं किया है, तो भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ऐसे सप्लायर का वो आपके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फॉल करेगा, विच मींस आप उसका क्लेम नहीं ले सकते हैं। चौथा क्लॉज, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause A by such limit as may be prescribed. Now, this is absolutely beyond imagination. This proposed finance act or finance bill rather, we will come across a situation where we will be bound to think in a way that government is trying to go beyond the boundaries to make sure that there is no revenue loss, even though it means a lot of loss to the genuine taxpayers. So look at this clause 4 and then realize कि एक genuine taxpayer के लिए कितनी बड़ी hardship है. Maybe some of us may not agree with me, but I am sure that there is a pool of people who will agree with me on this when we read out clause 4. ये क्या बोलता है? By any registered person who during such period as may be prescribed has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause A by such limit as may be prescribed. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक सप्लायर है, उस सप्लायर ने आपको माल बेचा या आपको सर्विसेज दी, उसके बदले में उसने आपको GSTR 1 भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर दिया। 1 में आपका आउटवर्ड सप्लाई दिखाई दे रहा है जो आपको 2A में नजर आ रहा है, और उसने जो 3B में डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उसी की सप्लायर का जो 2B था या 2A था उसमें कुछ ऐसे इनपुट्स आ रहे थे जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो ऐसे केस में अगर उसने कोई गलत इनपुट क्लेम किया हुआ है तो इसके वजह, अगर सप्लायर ने कोई गलत इनपुट क्लेम किया हुआ है तो उसके वजह से भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, which means that you will not be able to claim input tax credit of a genuine supply of inward raw material or services which you have taken during the course of your business, and you have paid all the due taxes to the supplier, but the supplier somehow has not availed the genuine input tax credits which were available to him. He has rather claimed some ingenuine input tax credits. So even in that situation, your input tax credit will be restricted straight away, and it will not be eligible to you as per section 16 subsection 2 clause BA. आप वो इनपुट भी नहीं ले सकते हैं जो आपके सप्लायर ने आपसे चार्ज किया है और आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि उसने रिटर्न भी भर दिया है, 3B भी फाइल कर दिया है, आपने उसको पैसा भी दे दिया है, बट उसके बावजूद अगर उस आदमी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजिटिमेट नहीं है तो आपको भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फॉल करेगा और आप नहीं ले पाएंगे। दैट्स क्लॉज नंबर 4. 5, by any registered person who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of subsection 12 of section 49, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. पांचवा क्लॉज क्या कहता है? By any registered person who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of subsection 12 of 49. तो मतलब जो सप्लायर है उसने अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो वहां पे भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज इज बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इसके अलावा भी अगर कोई बचा है तो वो केस उसको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये 6 क्लॉजेस हैं जो आपको एक डिफरेंट सेगमेंट देंगे आपके GSTR 2A या 2B में, जो कि रेस्ट्रिक्टेड होगा, और रेस्ट्रिक्टेड होगा मतलब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 38 which has been completely overhauled. Section 38 subsection 2, a newly introduced subsection which gives you a kind of split between the eligible input tax credit and ineligible input tax credit. अगला सेक्शन है सेक्शन 39 जिसमें चेंजेस हैं। क्या बोलता है? इन सेक्शन 39 of the CGST Act, पहला चेंज इन सबसेक्शन 5 for the word 20, the word 13 shall be substituted. So this 39 is about filing of the returns. इसमें पहला चेंज है कि एक NRI टैक्स पेयर के केस में जो पहले 20 तारीख को रिटर्न फाइल करना ड्यू होता था वो चेंज करके अब उसको 13 कर दिया गया है। तो 13th of the
following month, an NRI has to file his return. In subsection 7, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely, provided that every registered person furnishing return under the proviso to subsection 1 shall pay to the government in such form and manner and within such time as may be prescribed. So this all change is about the composition dealers. Composition dealers के लिए ये प्रोविजन कोई नया नहीं है, ये प्रोविजन पहले ही आ गया था. आई थिंक 1 जनवरी 2020 से ये इंप्लीमेंट भी हो गया था, बट इसको पहले लेके आया गया था एक नोटिफिकेशन और रूल्स के थ्रू. अभी इसको लॉ में ही डाल दिया गया. सो देयर इज नो फंडामेंटल चेंज एज फार एज द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज कंसर्न्ड. सो ये बात करता है क्यूआरएमपी की. सो क्यूआरएमपी यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें पहले भी 2 ऑप्शन देता था क्यूआरएमपी के लिए. पहला, आप अपनी एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए मंथली बेसिस पे और टैक्स जमा कर दीजिए, और फिर क्वार्टरली बेसिस पे उसकी रिटर्न फाइल कर दीजिए. दूसरा ऑप्शन देता था कि आपने पिछले क्वार्टर में जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जमा कराई है उसका 35% फर्स्ट मंथ में जमा कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट क्वार्टर तक अपनी पूरी लायबिलिटी को असेस करके फाइल कर दीजिए. So this is no change per se as far as the effective implementation is concerned, because this was brought in way back in 2020 itself, but now this has been brought to the law. So the only changes की जो चीज पहले नोटिफिकेशन के थ्रू था उसको लॉ में इंप्लीमेंट कर दिया. आई डोंट सी एनी अदर चेंज पर से. अब सबसेक्शन 9 में जो चेंजेस हैं ऑफ 39, सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 में जो चेंजेस हैं, अगेन दे आर कॉन्सिक्वेंशियल इन नेचर. तो ये बेसिकली कुछ वर्ड्स को चेंज करता है, एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर ओनली बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्टिव चेंजेस इन अदर सेक्शंस. So मैं इसको in the interest of saving some time, I'm skipping this, but this is nothing but only some consequential changes. So next change is in section 41. So in 41, for section 41 of the CGST Act, the following sections shall be substituted. So again, the change has been, the section has been overhauled, and a new section instead of the earlier one has been proposed to be now amended in the Act. So it says the first one, 41 subsection 1 says every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger. So we all know that you have to self-assess the input tax credit and then claim that input tax credit. The second one, the subsection 2 says the credit of input tax availed by a registered person under subsection 1 in respect of such supplies of goods or services of both the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed. So this is again a change. It says that wherever the supplier has not paid the applicable tax on which you have taken the input tax credit, you will have to reverse that input tax credit along with the applicable interest also, provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect to the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed. So it means that initially when your supplier does not make the payment of tax in due time, and the time will be prescribed through rules or notifications, then in that case you will not be entitled to claim input tax credit. Or rather, once you have taken the input tax credit, but it comes out in the light that the supplier has not paid taxes, then you have to reverse the input tax which you've already claimed. But in case the supplier at a later stage makes the due payment of the taxes, then you will be able to re-avail, but the interest loss is permanent in nature. So once you have to reverse because the supplier has not made the payment along with interest, then you can obviously reclaim once the supplier makes the payment, but not the interest component. So that is about section 41. Now section 42, 43 and 43A of the CGST Act, which used to speak about the communication between the supplier and the recipient,
have been proposed to be done away with, which means that all these 3 sections will, subject to the approval of the finance bill, these 3 sections will not remain in the act per se. Now, the next change will be in section 47. So in section 47 of the CGST Act, the words "or inward" shall be omitted. The words and figures or section 38 shall be omitted. After the words and figures section 39 or 45, the words and figures or section 52 shall be inserted. So these are again consequential changes in 47 because of the changes made in other segments of the law. These changes are required to be made. So I will not spend time on this. ये तीनों changes जो हैं, ये consequential changes हैं because of certain changes being made to other provisions of the law. So we'll skip them. Next is section 48 of the CGST Act. The words and figures, the details of outward supplies, inward supplies under section 38 shall be omitted. Again, a consequential change because of the change in section 38. Now, the next one is section 49 of the CGST Act. In subsection 2, the words, figures, and letters 43A shall be omitted. Again, the same thing, क्योंकि 43A ही खत्म हो गया है, तो उसका relevance यहाँ पे reference भी खत्म कर दिया है. So these are again some consequential changes. Let's not spend time on this, but I think subsection 10 को जो replace किया है, for subsection 10, the following subsection shall be substituted. ये important है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है. So this is 49 subsection 10. So it says a registered person, and this is a replacement of the earlier one. It says a registered person on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee, or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax, or cess, or B, integrated tax or central tax of a distinct person as specified in subsection 4 or as the case may be in subsection 5 of 25. So what does it mean? It means कि आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको किसी भी इंटर कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं. अगर कैश लेजर में वो एक फॉर्म में पड़ा है, आप उसको IGST, CGST, SGST, UTGST में कर सकते हैं, और या फिर एक ही पैन नंबर पे अगर आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं तो किसी डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. ये एक नया और वेलकम प्रोपोजिशन है. In such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act. तो बेसिकली अगर आप अपने किसी दूसरे नंबर पे कैश को ट्रांसफर करना चाहते हैं, और ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है. In many cases I have personally felt that because of a mistake, if you would deposit certain cash in one of your GST registrations where it was not required because you don't have any liability in that account, so there was no mechanism to take that money back unless you file a refund application in that particular state. But now with this provision, it is going to be much simpler. कि आपने गलती से एक ऐसे स्टेट के रजिस्ट्रेशन हेड में कैश लेजर में पैसा जमा कर दिया है जहां उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो पैसा आप दूसरे किसी रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं जहां आपकी रेगुलर कैश लायबिलिटी अपीयर होती है. बट provided that no such transfer under clause B shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his. आपकी liability unpaid पड़ी हुई है तो उस केस में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. फिर कहता है 49 का subsection 11. After subsection 11 the following subsection shall be inserted, namely एक 12 नया subsection introduce किया गया है. वो क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in this act, the government may, on the recommendations of the council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons as may be prescribed. तो आपको याद होगा एक रूल था 86 जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन था कि आप अपने इनपुट अपने ECL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 99% से ज्यादा की आउटपुट लायबिलिटी पे नहीं कर सकते हैं unless you comply with one of the conditions which were given. मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या आपका GST कम से कम 1 लाख रुपए का आपने पे किया हुआ है, या फिर आपने कोई रिफंड ऑलरेडी ले रखा है डिपार्टमेंट से, तभी आप 100% लायबिलिटी कैश में ECL से पे कर सकते थे, क्रेडिट लेजर से पे कर सकते थे. Otherwise, आपको कम से कम 1% of your liability you were supposed to pay in cash.
So the same provision which were there through the rule now has been proposed to be brought in the law itself in subsection 12 कि आपको ये restriction दिया जाएगा कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं. The next one in the change again is very, very important, and I think this is one of those few changes which we can consider to be pro SSC. So one such change is in section 50, subsection 3. So the following subsection shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of July 2007. तो ये जो सेक्शन है इसमें काफी सिग्निफिकेंट और अच्छा प्रपोज किया गया है. ये नया सबसेक्शन कहता है वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू था कि अगर आपने गलती से एक इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका नहीं था, आप नहीं ले सकते थे, वो अवेल भी कर लिया तो आपको उसका ब्याज के साथ रिवर्सल करना होता था. और बहुत सारे केसेस में ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा था कि आपने गलती से इनपुट क्लेम किया, उसको कभी भी यूटिलाइज नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी जब रिवर्स करते थे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी एज पर लॉ आ जाती थी. उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है. सो दिस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन 50 subsection 3 is a welcome change where they have said that the interest will only be payable in case you not only take a wrong input tax credit but also utilize it. Unless you utilize such amount, the interest provision will not be applicable. So that's a good one. उसके बाद section 52 of the CGST Act in the proviso for the words due date of furnishing the statement for the month of September, the words 30th day of November shall be substituted. Again section 52 यानी कि जो e-commerce से related section है उसमें भी changes करने का जो last day है उसको change करके 30th September की month की return की date से बढ़ा के 30th November कर दिया है. A universal change which has been made at various places in the law. Section 54 of the CGST Act, another significant section which talks about the refunds. We all know refund का सारा provision mechanism जो है वो section 54 से govern होता है. So इसमें जो first change है in subsection 1 in the proviso for the words and figures the returns furnished under section 39 in such the word such form and shall be substituted. तो ये basically एक छोटी सी anomaly है जिसको ठीक किया उन्होंने. In such manner की जगह in such form and manner कर दिया है. B में in subsection 2 the words 6 months the word 2 years shall be substituted. So in subsection 2 of 54 it is about the refunds related to some specified people. तो specified persons के केस में refund लेने की जो due date, specified person कौन है? जो UN मिशन के कुछ लोग हैं, embassies हैं, जो foreign tourists हैं, उन सब के केस में refund के लिए जो maximum time period था वो 6 months हुआ करता था. Now it has been increased to 2 years, as is the case for all other categories of refunds. तीसरा जो change है 54 में हुआ in subsection 10, the words brackets and figures under subsection 3 shall be omitted. इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा relevance है. पहले क्या बात होती थी? subsection 10 क्या है? subsection 10 है एक restriction कि आपका जो refund है वो ऑफिसर रोक सकता है. अगर मान लीजिए आपका कोई रिफंड ग्रांट होना है किसी भी प्रोविजन में तो उसको रोका जा सकता है अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है. मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, आपके अगेंस्ट कोई डिमांड है, कोई पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट है जो आपने नहीं दे रखा है, तो आपकी कोई भी रिफंड की फिगर उसके अगेंस्ट रोकी जा सकती है. बट ओरिजिनल लॉ ये कहता था कि अगर वो रिफंड सिर्फ 54(3) का रिफंड है. 54(3) में दो तरीके के रिफंड होते हैं. एक होता है एक्सपोर्टर्स के केस में, जीरो रेटेड सप्लायर्स के केस में, और दूसरा होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में. तो पहले जो लॉ था उसमें आई थिंक अनइंटेंशनली बट ये लिखा गया था कि अगर आपका रिफंड सबसेक्शन 3 से पर्टेन करता है तो उस रिफंड को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. द ऑफिसर कैन रिस्ट्रिक्ट दैट रिफंड अनलेस यू पे ऑफ ऑल योर लायबिलिटीज ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिमांड्स एटसेट्रा. बट नाउ दे हैव रिमूव्ड द वर्ड अंडर सबसेक्शन 3 व्हिच मींस कि अब आपका रिफंड किसी भी सेक्शन का हो, 54(2) का हो या किसी और सबसेक्शन में फॉल करता हो, तब भी उसको रोका जा सकता है प्रोवाइडेड कि आपकी कोई लायबिलिटी उस दिन ड्यू पड़ी हुई हो. फिर नेक्स्ट चेंज, ये एक और बड़ा अच्छा फंडामेंटल चेंज है. इसमें एसईजेड्स के केस में रिफंड्स को थोड़ा क्लैरिफाई किया गया है जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का इशू था. अब इन्होंने कहा है कि in clause 2 after subclause B the following subclause shall be inserted. Explanation का जो subclause 2 है
वो बेसिकली रिफंड्स के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो बात करता है रेलेवेंट डेट की। रेलेवेंट डेट आपको ध्यान होगा 54 में सब जगह लगभग ये लिखा हुआ है कि आपका रिफंड जो है वो रेलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर अंदर अप्लाई हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको रिफंड एंटाइटल नहीं होगा, वो टाइम बार हो जाएगा। सो वो 2 साल की कंडीशन एसईजेड रिलेटेड रिफंड्स के लिए स्पेसिफिक नहीं थी। So here is the proposed change which says that in case of zero rated supply of goods or services or both to a special economic zone developer or an SEZ unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक SEZ को या SEZ यूनिट को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उसका रिफंड लेने के लिए भी आपको 2 साल का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट व्हेन यू हैव फाइल्ड, यू वर सपोज्ड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब 3B की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो भी थी उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको ये रिफंड अप्लाई कर सकते हैं आप। सो दिस इज अ क्लैरिफिकेटरी change but very significant because there were so many refunds related to SEZ which were not being allowed by the authorities in want of this kind of explanation which was really required. So the last change, and then we will see if the time permits, we will talk about some question answers if there are any, but the last change, and then we will say it a day. So in section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, in subsection 2, the words brackets and figures subsection 2 of section 38 shall be omitted. Again, a consequential change because now the relevant subclause to subsection 2 of 38 has been amended. Accordingly, this change has been proposed. So now after this, there are certain notifications which have been given retrospective effect. So I will not get into those details because I think the time does not permit. We are already overrunning for the time. So with these words, I hand over the mic to MOC, and if there are any questions, any suggestions, or any comments, they're welcome. Pratik ji. Sir, wait, I'm calling to with the speaker. There may be some technical error. So you can take the questions. Hello, Manoj sir. Are you audible? Yeah, yes, Simpreet. Manoj sir, you can take the questions. You have the link of the second screen. Where is the user and the password is there? Okay, just hold on. Or I'll share it if you want. No, I think I have it. Just give me a minute. Is it visible? Yeah, it's visible. Just give me a minute, huh? Share the screen. The question is 14 number question is there.
on 14th row. Just one sec, I'll share the screen. So is my screen visible now? Yes, sir. On 14th row, there is a question. Okay, so it says I have 2B credit of rupees 100 in January month and claimed 80 rupees in 3B. In February month, I have 50 rupees credit and claimed 70 rupees in 3B. Added last month's 20 rupees. Now there is mismatch in February month as per department. As per new provision, department may restrict ITC for my customer as per budget provision. Now, see, my understand, although the detailed provision we will have to see, but I think the way it was always previously also was that the restriction of input tax credit will be on cumulative basis. So if you are availing something which was not availed by you in the previous month, but it was actually eligible to be availed. So if I understand your question correctly, you're saying that 100 rupees were eligible to you, but you had only taken 80 rupees in the month of January. And in the month of February, instead of 50 rupees, you've taken 70 because 20 were overflowing from the previous month. So according to me, the department is not going to ask you a question because this mismatch will only be taken into consideration on cumulative basis. Month on month basis, it is not possible because this kind of a time lag will always be there. Okay, so I think there's another one on row number 15. It says how it will come in notice to the buyer that the supplier has not paid and he has to reverse it. Very interesting question. Paliwal sir, Vinod Paliwal ji has asked this question. So my answer is very simple, my dear sir. You don't need to worry about this. This work, the significant work the government has taken on their shoulders. So what they will do is they'll give you a clear picture in GSTR 2A. They will only tell you that that your supplier has not made payment of tax or they have used wrong input tax credit. So you don't need to put your mind there. This will be done by the government portal itself. You only have to concentrate on your GSTR 2A. If your 2A is saying that your supplier has not paid the tax and that is why your money is restricted, so you only need to follow that. So as far as the legwork is concerned, you don't need to do anything. Okay, what is this? The next one, Shruti Ganeriwal. She's saying transportation service of fly ash is taxable or exempt. Sorry, madam, I don't remember it offhand. We'll have to see the notification whether this service particular is exempted or not. So honestly, I don't have an upfront answer to this. Do you see any other questions, dear, which I'm missing? Turn the next page. Next page. And how do I do this? So next option. No, we can conclude. There's no question on the next page also. Okay, there's no question on the next page. Okay, done. And thank you so much. Thank you, sir. I think all the questions which have been raised has been very well answered by you. And as we see, the number of questions are very less. So we can understand one thing, the clarity of your deliberation was very good. So this is the reason why we have very less number of questions to be answered. So sir, we have a past experience with you, as you said, and we know the way of your deliberation, the detailed analysis of your subjects which you do before providing the seminar. So sir, we are very thankful to you for accepting our this
invitation, and you are being with us for today's speaker. Thank you, sir. Now we will be moving towards our next session, which is related to decoding of budget 2022 on direct taxes. So I will request our chairman, the Jamshedpur branch, CA Vikas Agarwal ji, to please give the introduction of our second speaker, CA Avinash Gupta ji. Thank you, Prateek. CA Avinash Gupta sir is a very eminent speaker on direct tax, and he needs no introduction. But still, I'll give a formal introduction. Sir is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. He did his graduation from Shriram College of Commerce, Delhi University, and awarded the best student of the college. He's also the merit list of ICAI in CA final. He's also a law graduate. Presently, Sir is chairman of Northern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India for the year 21-22. He is also secretary of SRCC Alumni Association. He is also president of Tax Research Foundation, an NGO doing research on field of taxation. He is national treasurer of International Fiscal Association. He is a partner in APT and Company LLP Chartered Accountants, having head office at Delhi and 18 branches all over India. He has deliberation more than 2,000 lectures at national and international level. He is visiting faculty at National Academy of Direct Tax, Nagpur, Shriram College of Commerce, ICAI, ICSI, ICWAI, and various management institutes. Sir, we are honored to have you as a speaker today. And over to you, Prateek. Thank you. Thank you, Vikas ji. Good afternoon, friends. Prateek ji, the chairman of the Dhanbad branch. Vikas ji, I think you are also the chairman of Jamshedpur branch. My co-speaker of the day, Manoj ji, who have just given you the brief about the indirect tax proposals. And now it's the turn to direct tax. So thank you, both of you, for inviting me for this webinar. And let us start in quickly in next 1.5 hours. Let us discuss about the proposals of the direct tax. I need an help from Vikas ji and Prateek ji that if there is any questions, so you have to help me out. And whatever is the question, please read it and just ask it in between so that we can answer it there and then itself. So that's a request that I want to make to both of you. So be with me in this session. So when we start with this Finance Bill 2022 that have been presented in the Parliament, our Honorable Finance Minister took only 3 minutes to discuss the direct tax proposals or the amendments what she want to put. But when we read the fine prints, we got about 84 amendments in the Act, and all are super technical amendments that they have made in the Act. And there are many things which needs a good consideration. So we will discuss those proposals. So let us start with the rate of tax. So Vikas ji, there is no change in the rate of tax as far as the individuals are concerned, but we have given you one relief. The relief is that if you are an assessee who is an individual, your surcharge rate, the maximum surcharge which is applicable on you is 37% if your income is exceeding 5 crore. It is 25% if your income is between 2 crore and 5 crore. And it is 15% if it is 1 crore and 2 crore. So that's the surcharge.
But if you are earning an income which is a long-term capital gain under section 112A or short-term capital gain under section 111A, that is capital gain on listed securities, or you have a dividend income, the maximum amount of surcharge which is applicable is 15%. So 25% and 37% rate of surcharge is not applicable on three incomes, which is dividend income, short-term capital gain on listed securities, long-term capital gain on listed securities. So that is the law. But for all other incomes, especially the long-term capital gain under 112, there is a surcharge which is applicable. So there are many cases where farmers which are doing an urban agriculture land, or people who are selling their houses, etc. And during that year, if there is a huge gains that they have received, so maybe 5 crore, 6 crore, 10 crore, so they are liable for a surcharge of 37% over and above this 20% that they have to pay. Now the government have relaxed it, that on all the capital gains under section 112, whether it is a capital gain on account of sale of land, on account of sale of building, on account of sale of sculptures, paintings, or even the shares which is other than the listed shares. So in all those cases, there are many startups also who are selling their shares during the year, and these people are getting huge amount of gains during that year, liable to be taxed under section 112. So now the maximum amount of capital surcharge on long-term capital gain under section 112 is also restricted to 15%. So 20% main tax लगेगा और 15% का उनको क्या लगेगा, surcharge लगेगा, which comes to be 23%, और उसके ऊपर आपका 4% का cess लगेगा. तो ये this will come around 21% के आसपास, और 24% के आसपास आपका क्या होगा, you need to pay tax on this long-term capital gain under section 112. So this is the first amendment as far as the rate of taxes. Second उन्होंने कहा कि जो cooperative societies हैं, that cooperative society का जो tax rate होता था, वो होता था up to 10,000 rupees 10%, next 10,000 rupees 20%, remaining is 30%. And if the total income of a cooperative society exceeds 1 crore rupees, then a surcharge is applicable at the rate of 12%. Unlimitedly, जितनी भी इनकम होगी 12% का क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा. सो अब उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी एसएससी है तो उसको सरचार्ज जो है वो 10 करोड़ के ऊपर देना पड़ता है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कम सरचार्ज देना पड़ता है. तो अब उन्होंने एट पार विद कंपनी करके, तो एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज इनकम इज अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 crore to 10 crore 7% surcharge, and 10 crore and above it will be 12% as earlier as it is. So this is the second amendment with respect to the surcharge again. Third amendment is on AMT vis-a-vis MAT versus AMT. So MAT rate is 15% that have already been reduced in case of companies last year. Now in case of cooperative society, the AMT rate is 18.5%. Now they have made it at par with company. So under the cooperative societies also, the society is liable to pay AMT at the rate of 15% instead of 18.5%. तो ये उन्होंने second जो है AMT versus MAT को cooperative society को amendment करा. Third एक important amendment करा जो I think आप लोगों के लिए हो सकता है जरूरी हो. So now what happen in many government contracts, that companies, single company is not eligible to take the contract. So there is 2 or more companies who join hands together and then they bid for it. So प्रतीक जी मान लीजिए एक आपकी कंपनी है P लिमिटेड, विकास जी की कंपनी है V लिमिटेड, और मेरी कंपनी है A लिमिटेड. मेरे पास फाइनेंशियल पावर है, सो आई एम हैविंग अ फाइनेंस डिवीजन, विकास जी के पास टेक्निकल नॉलेज है, और आपके पास मैन पावर है. So we all three join hands together and bid for a bigger government contract, maybe let's say 500 crore, 1000 crore, etc. So in this, we have 2 options: either to form a new SPV, whereby we all three will be a shareholder of that company, or we will create it as an AOP, and then AOP is liable to pay tax on whatever is the income from that particular project, and remaining amount will come to us as share of profit of AOP, which is tax free. यही होता है सर. सो अब क्वेश्चन आया कि एओपी का जो टैक्स होगा वो कैसे लगेगा. एओपी का जो टैक्स होता है या तो एमएमआर लगता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, या जो रेट हम पे अप्लाई होता है उस प्रोपोर्शन में लगता है. बट ऑन दैट एओपी इज लायबल टू पे सरचार्ज व्हिच इज इक्वल टू एन इंडिविजुअल.
सो इंडिविजुअल के बराबर होता है, और वो 37% तक का सरचार्ज चला जाता था। तो मान लीजिए एओपी का सरचार्ज, एओपी एमएमआर पे टैक्स दे रही है, 30% उसका वो हुआ, और उसके ऊपर 37% का सरचार्ज लगा देते थे, तो कितना टैक्स बनता था एओपी का? 43% टैक्स अप्रोक्सीमेटली एओपी को देना पड़ता था। सो 43% के बाद जो रिमेनिंग 57 बचा, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। अब अगर वो इंडिविजुअली हम लोगों को देना पड़ता एज ए लिमिटेड, पी लिमिटेड और वी लिमिटेड, देन हाउ मच वुड बी द रेट ऑफ टैक्स? 26%। अगर मैं 22% की कैटेगरी में होता तो 25.17 आ जाता, अगर मैं पुरानी वो 25% वाली कैटेगरी में होता तो 26% होता, और अगर इवन मैं वो 30% वाले ब्रैकेट में भी होता तो भी मेरा जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है वो मेरा 34% होता, 34% से ज्यादा नहीं होता। बट हाउएवर अंडर एओपी आई हैव ऑलरेडी पेड 43% टैक्स। तो एक एबनॉर्मली थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नाउ द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन एओपी विल बी रिड्यूस्ड टू 15% इफ, only if all the members of AOP are companies. So अगर एक भी नॉन कंपनी हुई, एक भी एलएलपी हुई, पार्टनरशिप फर्म हुई या कोई इंडिविजुअल हुआ, तो द रेट इज वही 37% है। बट अगर एक एओपी के सारे मेंबर्स कंपनी हैं तो जो मैक्सिमम सरचार्ज जो लगेगा एओपी को वो 15% लगेगा, 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। So this is the fourth amendment which is there as far as the rate of tax is concerned. जो भी हमारा इन्होंने जो है टैक्स रेट पे जो इन्होंने चेंजेस करे हैं वो यही है। सो दिस इज दैट अमेंडमेंट। कैन आई मूव फर्दर? इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है सर अभी तक? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? विकास जी, प्रतीक जी, चलें आगे। यस सर, आगे चलो। चले सर, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट देयर इज एन अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल्स। सैलरी चैप्टर में हम आ जाते हैं पहले। तो सैलरी के चैप्टर में उन्होंने पहली अमेंडमेंट करी विद रिस्पेक्ट टू कोविड। हमें सबको पता है देयर आर 3 waves of COVID and many people have left us during this COVID pandemic. So in this many employers have given me for the medical treatment of the employee as well as the family member of the employee. So मेरे employer में मुझे कोविड हुआ या मेरे किसी फैमिली मेंबर को कोविड हुआ, so they have given me the money either in the form of reimbursement or they have given me certain ex gratia amount for the medical treatment. So प्रतीक जी, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई पैसे दिए मुझे तो then it becomes taxable in the hands of the employee. अब उन्होंने क्या किया, 25 जून को एक सर्कुलर, एक प्रेस रिलीज लिया और उन्होंने कहा कि हम कोविड का रिलीफ देंगे। 25 जून 2021 को ये आया था। Now they have incorporated the same in the act. What they said is that any employee, if they receive any amount towards the medical treatment of himself or any of the family member, the same is not regarded as perquisite to the extent the amount is actually spent. So अगर आपके एम्प्लॉयर ने प्रतीक जी 5 लाख रुपए दिए थे और मैंने उसमें से आपने एम्प्लॉय ने 4,80,000 रुपए खर्च कर दिए, तो सिर्फ 20,000 रुपए परक्यूजिट माना जाएगा, विच इज टैक्सेबल। 4,80,000 रुपए परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। नाउ व्हाट एवरीबडी हैज टू डू, that you have to advise your clients that those people who have actually given money to their employees, they need to take the declaration along with the bills and vouchers that out of the money given by the employer, how much amount they have actually spent. So those amount, or to the extent the amount is actually spent on the medical treatment of the person, then to that extent this amount is tax free. Remaining amount is deemed to be the perquisite under section 17(2). तो ये आपको ये अमेंडमेंट अब हमने एक्ट में आपको दे दी है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप प्रूफ वाउचर्स वगैरह ले लीजिए। सेकेंड अमेंडमेंट सर रिलेटेड टू कोविड। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर नहीं है, प्रतीक जी का कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, विकास जी का कोई एम्प्लॉयर नहीं है, वी ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, या हम कहीं पे एम्प्लॉयड भी हैं तो भी हमारे को जो है लोगों ने, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने जो है हमें क्या किया, हेल्प किया ड्यूरिंग दी कोविड पेंडेमिक फॉर गेटिंग दी मेडिकल ट्रीटमेंट। 20 लाख का बिल आ गया,
पैसे थे नहीं देने के लिए. So many people contributed, the school alumni, college alumni, resident welfare associations, or friends, family, etc. They have contributed. So any amount which have been contributed by family, जो relative की definition में आ गए, वो तो 56(2)(10) में exempt थी. But many people received money. कईयों का 40-40 लाख का बिल बना और वो 40 लाख रुपए उन्होंने लोगों से इकट्ठे किए, कईयों को क्लाउड फंडिंग से इकट्ठे किए, etc. etc. Now this entire money received towards the medical treatment of the person is taxable under the hand 56(2)(10). So 56(2)(10) में any money received from any person exceeding ₹50,000 is taxable. अब उन्होंने यहाँ पे amendment करा और उन्होंने कहा that if for the medical treatment of the COVID-19, if any person receives any money from any person other than employer, तो employer का 17 में कर दिया, other than employer से अगर हम लेते हैं, तो that amount is not taxable under section 56(2)(10) to the extent the same amount is actually spent for the medical treatment of the person. तो जितना आप मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च कर दोगे उतना अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा. So this is the second amendment on COVID. Third amendment, if unfortunately the person died, if the person died because of the COVID-19 and any amount is received by the family member of the deceased person, उसके family member को कोई पैसा मिला and that money is received from the employer of the deceased person, तो जो मरा है, जिसकी डेथ हुई है COVID-19 से, उसके employer ने अगर कोई पैसा दिया, the entire amount received from the employer by the family member of the deceased, क्योंकि family member और employer का कोई employer-employee relationship नहीं है, they are any other person, then the entire amount without any limit is tax-free, not taxable under section 56(2)(10), provided the money should have been received within 12 months from the end of the month in which the death happened, and death should be because of COVID-19. Here are few issues which have come up. So many people may ask that this money is only when there is a death due to COVID. So is it mandatory that the death certificate should have the reason of death as COVID-19? Answer is yes. What will happen if the person is suffering from COVID? His COVID is negative, but he could not recover himself from the COVID and he died or she died. So what will happen in those cases? So that's still a question mark, that whether these kinds of cases will be covered under this particular benefit or not. And many employers are paying annuity for 3 years or 5 years. So many employers are saying, okay, we will pay you 50% of the salary of the disease for next 3 years. So here the limit is whatever the family member received within 12 months from the end of the month in which the death occurs, then this amount is tax-free. Any money received after 12 months is fully taxable. So this is another point one should take in mind. Fourth amendment relating to COVID. If money is received from any other person other than employer, so अब एक पर्सन की डेथ हुई, डेथ कोविड के कारण हुई, और उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को बाकी लोगों ने पैसे इकट्ठे करके दिए. So this person received, let's say 40 lakh, 50 lakh, 5 lakh, 10 lakh money from various parties, various people, but the money is being given to them or to the family member of the disease because the disease have died because of COVID. Then the same is exempt under section 56(2)(10) to the extent of 10 lakh rupees. So अगर 40 लाख रुपए मिले तो 10 लाख रुपए टैक्स फ्री और बाकी 30 लाख रुपए पे क्या होगा? They have to pay tax on this 30 lakh rupees. So that is the third or fourth amendment with respect to the COVID-19 that they have made. अब विकास जी, आप सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि सर डेथ जिसकी हुई उसकी एक वाइफ थी और 2 बच्चे थे, अब 40 लाख रुपए लेने हैं, तो अगर मैं वाइफ के अकाउंट में लूंगा तो क्या होगा? 30 लाख रुपए टैक्स हो जाएंगे. तो आप उसको एडवाइस करो 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ले, वाइफ के अकाउंट में 10 लाख एक बच्चे के लिए, 10 लाख एक बच्चे के लिए, तो 30 लाख एग्जाम और 10 लाख रुपए के ऊपर बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. उसको भी आप बाइफरकेट कर लो, 3-3 लाख उसमें ले लो या 5 लाख एक में ले लो ताकि टैक्स ना लगे उस पर. तो दैट काइंड ऑफ अ प्लानिंग वन कैन ऑलवेज मेक.
तो ये 4 अमेंडमेंट जो मैंने अभी आपको बताई, ये कोविड-19 के रिलेशन में आपको आई। Can I move further, sir? Any questions till now on these 4 amendments? Okay, sir. Now let me move further. Then there is an amendment with respect to cryptocurrency. इसको हमने डाला सेक्शन 2 क्लॉज 47A डाला हमने, और उसको हमने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. Now what is this virtual digital assets? So they have said there can be 3 kinds of virtual digital assets. What is this virtual digital asset means? Any information, any code, any number, any token. So कोई information हो सकती है, code हो सकता है, number हो सकता है, token हो सकता है, but it should not be an Indian currency or a foreign currency. Indian currency और foreign currency नहीं होनी चाहिए. Generated through cryptographic means. So cryptographic means से generate होना चाहिए, computerized means से generate होना चाहिए. नाम आपका जो मर्जी हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी कहो, चाहे लिथियम करेंसी कहो, चाहे कुछ भी कहो, any kind of a currency which is in the form of an information, code और token और number हो, और cryptographic means से वो क्या हुआ हो, generate हुआ हो, और उसके but it should have some value, और वो investment form में हो नहीं हो, electronically traded हो नहीं हो, transfer हो सकती हो नहीं हो सकती हो, all kind of these kind of things are called virtual digital asset. Then second they said that it will include non-fungible tokens. मुझे नहीं पता fungible token क्या होता है या non-fungible क्या होता है, जो इसके experts है वो उनको पता होगा कि कोई non-fungible token जो होगा उसको भी हम virtual digital asset कहेंगे. और थर्ड उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई कि इसके अलावा ऐसा और क्या हो सकता है जिसको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में डाल सकते हैं. So this is the first definition of virtual digital asset taken in section 2, जिसमें उन्होंने ये बात करी. उसके बाद उन्होंने कहा 115 में उन्होंने एक सेक्शन में डाला virtual digital asset if transferred during the year on or after 1st of April 2022. तो अब जो 1 अप्रैल 2022 के बाद जब भी आप कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे, they are liable to be taxed at the state forward rate of 30%. तो 30% के रेट पे आपको जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. नो एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड. जो भी आपकी सेल वैल्यू होगी उसमें से किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट. सो प्रतीक जी, अगर आपने विकास जी से वो बिटकॉइन खरीदा था 10,000 रुपए में और अब आपने उसको 50,000 में बेच दिया, और वो आपने उसको जब बिटकॉइन खरीदा था तो डीमेट में रखा और डीमेट के आपने 5,000 रुपए चार्जेस भी दिए, बेचते समय 2,000 रुपए ब्रोकरेज भी दी. सो आपका सेल प्राइस हो गया 50,000 रुपए, आपका परचेज प्राइस हो गया 10,000 रुपए, 5,000 रुपए अदर चार्जेस, 2,000 रुपए डीमेट ट्रांसफर चार्जेस. कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ whatever amount you have paid at the time of acquisition, which is 10,000 rupees. So 50,000 minus 10,000 rupees is the amount, minus 10,000 is the 40,000 rupees is the taxable amount, and you have to pay 30% tax on it. No expenditure. अगर मान लीजिए मैंने कोई बिटकॉइन जनरेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, कंप्यूटर का बिल दिया, ये सब दिया, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड. ठीक है जी. और जो भी आएगा उसके ऊपर मुझे क्या करना है, 30% टैक्स देना है. मेरे बिटकॉइन वर्चुअल डिजिटल एसेट में प्रॉफिट हुआ, कोई और हेड में मुझे ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ, आई कैन नॉट सेट ऑफ. मेरे किसी और हेड में गेन हुआ बट वर्चुअल करेंसी डिजिटल एसेट में लॉस हुआ, आई कैन नॉट सेट ऑफ, आई कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड. तो ये इसका गेन या लॉस ना किसी और के गेन और लॉस से सेट ऑफ हो सकता है और ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. हाउएवर, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट से प्रॉफिट हुआ, दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट से ड्यूरिंग द ईयर ही लॉस हुआ, उन दोनों को आप सेट ऑफ कर सकते हो. सो मान लीजिए मैंने पूरे साल में 100 बार बिटकॉइन बेचे और 100 बार खरीदे, 80 बार प्रॉफिट हुआ, 20 बार लॉस हुआ, तो उनको नेट करके ड्यूरिंग द ईयर निकालूंगा. नेट में मेरा कितना गेन है या कितना लॉस है फ्रॉम दिस
ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, और उसके ऊपर मुझे 30% जो है टैक्स पूरा देना पड़ेगा। किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर नहीं देंगे सिवाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जितने का खरीदा उसका वो करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पता कैसे चलेगा, उसके लिए उन्होंने एक नया सेक्शन डाला 194S। और 194S में क्या कहा उन्होंने 194S में ये कहा कि अगर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करता है, so the person who is responsible for making payment to a resident for acquisition of the virtual digital asset, the person is under an obligation to deduct tax at the rate of 1%. तो 1% आपको जो है TDS डिडक्ट करना है, कब? जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे। सो अगर प्रतीक जी आपने विकास जी से वो बिटकॉइन खरीदे, so you are under an obligation to withhold 1% tax when you are making payment to विकास जी फॉर दैट पर्टिकुलर बिटकॉइन। अब विकास जी कह रहे हैं जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे बाइक खरीद के दे दो या गोल्ड खरीद के दे दो। सो you have made the consideration of buying this virtual digital asset which is other than money. Then the law says that if the consideration is paid other than the money form, either you collect this amount of tax from Vikas ji, means the person who is selling it, or you deposit the same from your own pocket. So या फिर आपको अपनी जेब से उसको जमा करानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने विकास जी से बिटकॉइन खरीदा और विकास जी ने आपसे लिथियम कॉइन में एक्सचेंज कर लिया, तो वन डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट इज sold and the consideration is paid in another virtual digital asset. तो एक डिजिटल एसेट की जगह दूसरी डिजिटल एसेट मिली। इन दिस केस विकास जी जब आपको वो मिलेगी दूसरी डिजिटल एसेट, तो आपको उनका टीडीएस काटना है और प्रतीक जी को आपका टीडीएस काटना है। तो दोनों एक दूसरे का 1% के हिसाब से टीडीएस काटेंगे। तो अगर आप दोनों एक्सचेंज करते हैं तो भी आपको दोनों को टीडीएस काटना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अब उसके लिखा है, उसके बाद नीचे लिखते हैं 194S में, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF नो TDS इज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194S if the person is a specified person and the amount of consideration paid does not exceed 50,000 or in any other case 10,000. So अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो 50,000 रुपए तक आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो आपको 10,000 रुपए तक टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्पेसिफाइड की डेफिनेशन उन्होंने दी, स्पेसिफाइड पर्सन मींस एन इंडिविजुअल और HUF who is running business or having business income but the turnover of the business does not exceed 1 crore, or in case of profession the turnover does not or receipts does not exceed 50 lakh rupees. So these are called as specified person. Or in any other case, if the person or any HUF or firm who is not doing the business at all, so these are called specified person. All other persons are called non-specified person. So आप प्रतीक जी मान लीजिए आप मेरे से खरीदते हैं, you are buying it from me and you are running a profession. So आप हो गए specified provided आपके professional receipts जो हैं वो 50 लाख से कम है। अगर आप 50 लाख से ज्यादा हैं तो आप नॉन स्पेसिफाइड हो गए, और अगर 50 लाख तक की रिसीट है आपकी तो आप स्पेसिफाइड पर्सन हो गए। सो अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो अप टू 50,000 रुपीज इन एन एनम आपको कोई टीडीएस नहीं काटना, और अगर आप नॉन स्पेसिफाइड हो गए तो 10,000 रुपए तक आपको कोई टीडीएस नहीं काटना। अंडर 194 देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन टैन नंबर, तो टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। पेन टू पेन जैसे हमारा प्रॉपर्टी का टीडीएस जमा होता है वैसे ही ये टीडीएस 194S में भी जमा हो जाएगा। So that is also there. So this is the third amendment what they have proposed for cryptocurrency or virtual digital asset. Fourth amendment is there under section 56(2)(10). 56(2)(10) में अगर किसी एक पर्सन ने क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट कर दी, जैसे प्रतीक जी अभी मेरे को थोड़ी देर बाद लेक्चर के बाद ये गिफ्ट करने वाले हैं अपनी डिजिटल करेंसी, क्योंकि ही इज सो एक्साइटेड अबाउट द सेम। सो अगर प्रतीक जी आप मुझे कोई वर्चुअल करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट करना चाहें एंड इफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000 तो मेरा 56(2)(10) में एग्जेम्प्ट है। बट अगर 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि लेक्चर के बाद आप मुझे 5 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी देंगे, सो देन इट बिकम
टैक्सेबल। मैंने कहा कैसे टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज 56(2)(10) में लिखा हुआ है एसेट मींस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब कैपिटल गेन के लिए जो है एसेट की डेफिनेशन वो यहाँ से हम लेते हैं। अब उन्होंने कह दिया एसेट मींस एसेट एज डिफाइंड अंडर 52 ऑफ द एक्ट एंड इंक्लूड्स वर्चुअल डिजिटल एसेट। सो आप मुझे जो वर्चुअल डिजिटल एसेट देंगे अब वो भी मेरे 56(2)(10) में कवर हो जाएगी। एंड आप 5 लाख रुपए की जो मेरे को देंगे उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पे दी टैक्स ऑन द सेम, और आपको 1% का टीडीएस भी काटना पड़ेगा उसके ऊपर। अपनी जेब से जमा करो चाहे जैसे मर्जी करो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। So this is 4 amendments with respect to the virtual digital assets तो आपको दी हैं। Next amendment, let's go to the business chapter. Under the chapter business, there are 2 important amendments what they have proposed. The first amendment they have proposed under section 37. So 37 में लिखा हुआ था any amount paid as penalty for violation of any law is not allowable. So आप कोई भी किसी तरह का भी कोई लॉ का वायलेशन करेंगे तो वो आपको उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी क्या होती थी, नॉट अलाउेबल होती थी। बट लॉ ऑफ विच कंट्री, लॉ ऑफ इंडिया or law of any country. So there are confusion in it because many pharma companies and many other companies are under an obligation to pay penalties abroad for possible violation of their domestic law of those countries. तो अब उन्होंने कहा law of India or any other country outside India. So कहीं का भी law violate करेंगे और उस law के violation पे कोई penalty लगेगी, then that penalty is disallowed. So that expenditure will not be allowable under section 37. First. Second, they said that if any expenditure is made which is in violation of any regulatory association or regulatory commission, then that amount is also disallowed. So जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर को कोई गिफ्ट नहीं देंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल किसी भी डॉक्टर को कोई फॉरेन टूर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो यू शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अ बेनिफिट. स्टिल फार्मा कंपनीज आर गिविंग बेनिफिट्स टू दीज डॉक्टर्स. सो दे सेड बिकॉज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैव expressly said and violated and said that you should not do it. If you do it, then it is a violation of that particular direction and guidelines. Hence, the expenditure on those things, जो भी बेनिफिट देगा उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे. दैट विल बी डिसअलाउ. यहां तक कोई बात नहीं. तीसरा उन्होंने कहा एनी काइंड ऑफ अ कंपाउंडिंग फीस पेड अंडर एनी लॉ विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया is also not allowable. विकास जी अब से सारे रिटर्न ऑन टाइम, लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी रिटर्न नॉट अलाउड, fees paid to late filing of TDS return not allowed, late filing of ROC returns. So whatever additional fees is being paid by the people, those additional fees are also disallowed. Last not the least, all traffic challans paid by the buses, tempo driver, tempo, or those who are into the transport industry specifically. So जितने भी आपने चलान पे करने हैं पुलिस को, और those are all compounding fees. So those things are also not allowed for next year. So 1 अप्रैल 2022 से आप ये सारी के सारी जितनी भी हम कंपाउंडिंग फीस पे करेंगे, या कोई हमने फेमा के अंदर कोई कंपाउंडिंग फीस करी, टीडीएस की कोई कंपाउंडिंग फीस पे करी, so all compounding fees are also not allowed as expenditure. तो ये आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दे कि ये सब चीजें क्या होगी, अलाउ नहीं होगी. नेक्स्ट अमेंडमेंट 48(2)I कहता है certain expenditures are disallowed. Tax paid under the income tax under this act. So आपने किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स पे किया है तो वो हमारा डिसअलाउ होता है, we all know. However, people have claimed the cess paid under the act as an allowable expenditure. जिसमें पहले एजुकेशन सेस होता था, फिर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आया, फिर मेडिकल एंड एजुकेशन सेस आया, और उसके बाद अब खाली सेस आ रहा है. तो ऑल दीज सेसेस पीपल हैव क्लेम्ड एज अलाउएबल डिडक्शन. नाउ the High Court said
in case of Sesa Goa, and in another case in Rajasthan, High Court also said, yes, this is an allowable deduction because it is not equivalent to the tax paid. So it is a cess which is there and it should be an allowable deduction. अब उन्होंने यहाँ पे 40IA में डाल दिया that tax means any surcharge or cess paid, and that is a retrospective amendment with effect from assessment year 2005-2006. 17 साल retrospective amendment करी और उन्होंने कहा कि कोई भी cess आप पे करोगे या check पे करोगे under the income tax act और आप कोई भी surcharge पे करोगे, that will be and disallowed, that will not be an allowable expenditure. तो ये हमारा next जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई अंडर द हेड पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन. इसके बाद कैपिटल गेन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, अदर सोर्सेज में कोई अमेंडमेंट नहीं है. देन देयर इज अ न्यू अमेंडमेंट व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड अंडर सेट ऑफ क्लबिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. So there is a new section which have been proposed under section 79A. उन्होंने कहा कि in case of any search or survey proceedings, if there is a income which have been surrendered or there is an income which have escaped assessment or undisclosed income is being declared by the SSC, then this income cannot be set off against any other loss of the year or any brought forward loss. So अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर साल में आपने 5 करोड़ रुपए मान लीजिए आपके क्लाइंट ने सरेंडर करे because of the search or survey proceedings going on, then this amount whatever have been surrendered cannot be set off against either the current year loss or the carry forward losses, brought forward losses of the year or unabsorbed depreciation. तो आपको वो set off हम allow नहीं करेंगे. So that's the new section 79A which have been incorporated. इससे पहले एक छोटा सा सेक्शन और 68 उन्होंने अमेंड किया, वो मेरा रह गया. So let us come to 68 again. So 68 says that in case of a closely held company, if they are receiving any amount as share application money or subscription for the shares, then the person who is making the application or person who is making has to prove the source of the source. तो आपका सोर्स का सोर्स भी आपको क्या है बताना पड़ेगा कि वो आप कहां से पैसा आया है. अब उन्होंने यहाँ पे कर दिया that apart from that, if any person have received loan, so मैंने विकास जी आपसे लोन लिया है 5 लाख रुपए का. Now you have given me loan and that is applicable for all assesses. Then it is my obligation that if AO want, they can ask me to give all the papers of Vikas ji. That is already there for the last time, last provision as well. But now from where Vikas ji you have got the money? So अगर मान लीजिए आपने किसी और से लोन लेके मेरे को लोन दिया है, so आपको उस जिस पार्टी से लोन लिया है उस पार्टी की भी पूरी डिटेल अब हमें एओ को देनी पड़ेगी. तो सोर्स का सोर्स भी अब हमें बताना पड़ेगा इन केस ऑफ लोन ट्रांजैक्शन, लोन्स और बोरोइंग्स. तो ये हमारा 68 में लोन्स एंड बोरोइंग्स के लिए भी उन्होंने नया ये प्रोविजन डाल दिया. नेक्स्ट 80 CCD में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों को पार करके कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन थी 80 CCD की वो 14% फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. सो दैट्स नॉट मच चेंज. 80 DD एक सेक्शन है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. सो अगर मान लीजिए आपके परिवार में या किसी एसएससी है उसके ऊपर if any person who is dependent on the SSC and that person incurs any expenditure on the medical treatment of that person who is suffering from disability or person suffering from severe disability, तो उसके लिए उसको डिडक्शन मिलती थी 80 DD में to the extent of 75,000 rupees or 1 lakh rupees as the case may be. Now this person can also buy an insurance in the name of the dependent person who is suffering from disability or severe disability. तो उसके नाम पे भी एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ले सकते थे. And whatever amount paid by the SSC towards the insurance premium, that is also allowed as deduction under section 80 DD. तो ये उसकी प्रीमियम होना का भी डिडक्शन मिलता था, provided the amount should be received by the disabled person only after the death of the person or death of the SSC, and
money may be received on a one time lump sum basis or maybe as an annuity. तो वो एक रिस्ट्रिक्शन थी. अब मान लीजिए अगर उस पर्सन की डेथ 90 इयर्स तक नहीं हुई एसएससी की, तो पैसे कहां से आएंगे? 90 इयर्स के बाद मिलेंगे. पर्सन के पास तो खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे. तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर पर्सन 60 एसएससी इफ द 60 इयर्स और उससे ज्यादा का हो गया है, आफ्टर दैट द मनी इज बीइंग रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस बाय द डिजीज by the disabled person from the insurance company, then that amount is tax free. So 60 साल के बाद एसएससी 60 साल से ऊपर हो गया और उसको अगर कोई पैसे मिले या वो डिपेंडेंट जो है डिसेबल पर्सन है उसको कोई पैसे मिले या तो लमसम मिले या एन्युटी के फॉर्म में मिले, तो दैट अमाउंट इज आल्सो टैक्स फ्री. दिस इज 80DD. 80IAC स्टार्टअप्स के लिए कहा गया जो सनसेट क्लॉज 31 मार्च 2022 थी, दैट हैव बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2023. इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने की डेट थी वो 31 मार्च 23 थी, दैट हैव बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 24. So not a big deal. It's a normal, simple extension of 1 year which have been given. Next, very important provision which have been there under section 139(8)(a). What is this 139(8)(a)? This is called as updated return. Now, a new return which is called as updated return has been incorporated, which says that any SSC, whether he have filed his return of income in past or not, they can file an updated return within 24 months from the end of the assessment year. So जिस भी assessment year की फाइल करनी है उसके बाद 2 साल तक कोई भी एसएससी चाहे उसने ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, in all the cases he can file an updated return with the government of India income tax department in a separate form in the prescribed manner and in the prescribed form, but it has to be filed within 2 years from the end of the assessment year. But this return has to be filed along with the tax liability on the income, interest liability on the income, and additional tax to be paid. Any return filed without these three is treated as a defective return, and the return is not considered till the time the defect is removed, meaning thereby till the time payment of tax, interest, and additional tax is not made. Additional tax कितना देना है? 25% of additional tax to be paid if the return is filed within a period of 1 year from the end of the assessment year, and 50% amount has to be paid as additional tax if the return is filed beyond 1 year but up to 2 years time. So ये अगर आप इसको देना चाहते हैं कोई, तो ये पैसा देके, टैक्स देके, इंटरेस्ट देके और एडिशनल टैक्स देके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अभी कैसे कंप्यूट होगा, क्या होगा, अभी बताऊंगा. Following SSCs cannot file this updated return. कुछ लोगों को कहा गया कि आप updated return फाइल नहीं कर सकते. In what cases? Updated return cannot be a loss return. So जो भी updated return आप फाइल करेंगे वो loss return नहीं हो सकती, पहली चीज. Second, updated return cannot decrease your tax liability what have been shown in the original return, revised return or belated return. So original return में आपकी tax liability 5 लाख थी, updated return में आप 4 लाख करना चाहो, नहीं possible. So you cannot decrease the tax liability. So that is second. Third, the person cannot. So first of all, the updated return cannot be a refund return, cannot be filed for claiming refund. Fourth, the updated return cannot be filed where the amount of refund have been increased. So जिसमें amount of refund अगर बढ़ जाएगा तो उस केस में भी आप updated return file नहीं कर सकते. The person cannot file an updated return if the search proceeding is going on, survey proceeding is going on, or the information under requisition have been received for any cash, jewelry, bullion, etc. CBI से कोई information आई हुई है, किसी और एजेंसी से कोई information आई हुई है और उसके ऊपर काम चल रहा है, तो in this case also
updated return cannot be filed by the assessee. Next, an assessee who have already filed an updated return for a particular assessment year cannot file another updated return. So one time opportunity दी गई है, आपने एक बारी updated return file कर दी, then matter is over. You cannot revise it, cannot again file an updated return. So आप दोबारा updated return file नहीं कर सकते. That is not permissible. Next, any assessee against whom an assessment proceeding is going on under section 143(2) or 143(3) or 154, 148 और 153A, 153C, किसी भी तरह की असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रीकॉम्प्यूटेशन की कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. प्रतीक जी, आपको एक लव लेटर आया है 148A में फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपकी प्रोसीडिंग क्यों ना खोल दी जाए, तो क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते? सर मेरे को लगता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी इसलिए वो बोल रहे हैं कि तो उन्होंने भेजा ना सर, तभी तो आपको चिट्ठी भेजी है, शोकॉज नोटिस भेजा है कि आपकी नहीं कर प्रोसीडिंग सकते क्यों ना खोल दी जाए. तो क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते? सर, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं सर. प्रतीक, विकास जी आपका क्या कहना है? नहीं कर सकते मेरे हिसाब से. हैं? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. नहीं. बिल्कुल कर सकते हो सर. Till the time notice under section 148 have not been issued, क्योंकि आपकी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है जब आपका 148 का नोटिस आता है. 148A से कोई फर्क नहीं पड़ता. 148 से कोई होता है तो आप यू आर फुल्ली अलाउड टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न. रेदर दे हैव प्रोवाइडेड यू एन मैकेनिज्म कि जैसे ही 148A का नोटिस आए आप फटाफट अपडेटेड रिटर्न फाइल करो और उसको लिख के दे दो कि भाई साहब देखो अपडेटेड रिटर्न फाइल है और ये इनकम जो आप बता रहे हो ऑलरेडी टेकन केयर है. तो वो आपका 148 नहीं करेंगे इन दो सर्कमस्टेंसेस. ठीक है सर? तो 148A से घबराना नहीं है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट, if an assessing officer is having information under the Benami Act, Black Money Act, Copa-Posa Act, Smuggling Act, etc., then also assessee is not in a position or assessee cannot file an updated return. If any information is received from foreign countries under exchange of information like Panama Leaks, HSBC bank accounts, Swiss bank accounts, etc., then also the assessee cannot file an updated return. Last, if there is a prosecution launched against the person, then also the assessee cannot file the updated return. तो इतने केसों में वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता. क्विकली रिकैप करेंगे. लॉस रिटर्न नहीं हो सकती, टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हो सकती, रिफंड नहीं मांग सकता, रिफंड इंक्रीज नहीं कर सकता, सर्वे सर्च या कहीं से रिक्वेशन है तो नहीं कर सकता. एक बार ही फाइल कर दिए अपडेटेड रिटर्न तो दोबारा नहीं कर सकता. अगर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन चल रहा है तो नहीं कर सकता. इंफॉर्मेशन अगर कोई अवेलेबल है अंडर द स्मगलिंग एक्ट, बेनामी, कोपा-पोसा, पेमा और बेनामी तो नहीं कर सकता. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में कोई आई है तो नहीं कर सकता. प्रोसिक्यूशन चल रही है तो नहीं कर सकता. तो ये सारी चीजों में जो है वो इंफॉर्मेशन वो जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता. बाकी सब केसों में कर सकते हैं. अब जब मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है तो क्या क्या चीजें देनी है सर? आपने टैक्स देना है, आपने इंटरेस्ट देना है और आपने आपने एडिशनल टैक्स देना है. अब आया है कि एडिशनल टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एडिशनल टैक्स. तो उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन डाला 140B. 140B talks about the amount of additional tax to be paid by the person. और एडिशनल टैक्स को उन्होंने बोला कि दो कैटेगरी है, या तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल होगी या ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं होगी, या बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल होगी या नहीं होगी. मैंने आज तक, मेरा एसएससी ने आज तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की. उन्होंने कहा कोई बात, यू कंप्यूट द इनकम, आप अपडेटेड इनकम कंप्यूट करो कि कितनी इनकम, कंप्यूट द टैक्स ऑफ दिस अपडेटेड इनकम, रिड्यूस इट विद द अमाउंट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जितना भी जो दिया है वो माइनस करो. रिड्यूस इट विद एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट, अगर उनको लेना है वो माइनस कर दो.
कोई मैट का क्रेडिट है या एएमटी का क्रेडिट है वो माइनस कर दो। उसके बाद जो बचेगा दिस इज कॉल्ड एज टैक्स। सो मेरी टैक्स लायबिलिटी 5 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए मेरा टैक्स वैक्स सब ये टीडीएस वीडीएस बना के बना, तो 2 लाख रुपए जो मेरा बचा दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स। एड 234A, 234B एंड 234C। तो 234A, B, C का इंटरेस्ट ऐड कर दो। ए का कब तक होगा? 1 अप्रैल से लेकर आज तक का, फिर रिटर्न फाइल ही नहीं है पहले कभी। सो 234A ऐड कर दो, B ऐड कर दो, C ऐड कर दो। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, मान लीजिए वो इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपए, तो टैक्स कितना आया था? 2 लाख रुपए, और इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपए। दोनों को ऐड कर दो, तो 2 लाख प्लस 1 लाख इज 3 लाख रुपीज, और इस दोनों को ऐड करके इसका दिस इज कॉल्ड एन एडिशनल टैक्स। इसका 25% जमा करना है। कब तक? अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर है, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, और 50% और देना है एज एडिशनल टैक्स अगर वो बियॉन्ड 1 ईयर बट अप टू 2 ईयर्स तक है, तो आपको 25% या 50% देना है। ये किस केस में मैंने आपको बताया? ये मैंने आपको बताया उस केस में जहां पे मेरी कोई पुरानी रिटर्न फाइल्ड नहीं है। बड़ा सिंपल है। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा कि मैंने पुरानी रिटर्न फाइल की हुई, मैंने 139(1) में ओरिजिनल रिटर्न फाइल है, या उसको मैंने रिवाइज कर दिया तो रिवाइज रिटर्न है, या मेरी बिलेटेड रिटर्न फाइल। तो क्या करना है? कोई बात नहीं, पहले कहते हैं जी अपडेटेड इनकम। अपडेटेड इनकम के ऊपर टैक्स निकालो। उस टैक्स में से जो पुराना टैक्सेस जितने भी थे, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट हुआ है, वो सब क्या कर दो? रिड्यूस करो। कोई रिफंड आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने, तो वो रिफंड ऐड कर दो, उसको ऐड बैक कर दो। उसके बाद कोई फॉरेन टैक्स का क्रेडिट लेना ले लो, कोई एडिशनल टीडीएस लेना है, जो आपने एडिशनल इनकम ऑफर करी उसके ऊपर भी कोई टीडीएस टीसीएस है तो उसको भी आप ले लो। इसके बाद जो बचेगा उसको हम कहते हैं टैक्स देना है। इसके ऊपर 234B और 234C का इंटरेस्ट ऐड करो। 234A ऐड करो कब? जब ओरिजिनल रिटर्न जो थी वो बिलेटेड रिटर्न, और वो कब तक का करना है? 1 अप्रैल से लेकर जब आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी। मान लीजिए जुलाई लास्ट डेट थी और आपने अगस्त में फाइल करी, तो आप 1 अप्रैल से लेकर अगस्त तक का 234A ऐड करोगे। आज तक का नहीं करना, जब भी बिलेटेड रिटर्न फाइल है तब तक का। और अगर बिलेटेड रिटर्न ही नहीं है, वो ओरिजिनल रिटर्न थी, विद इन टाइम थी, या रिवाइज रिटर्न विद इन टाइम थी, तो आपको 234A का इंटरेस्ट नहीं लगाना, फिर से 234B लगाना है, 234C लगाना है। इसको, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, टैक्स, दोनों को ऐड करो। एडिशनल टैक्स 25% या 50%, जो भी मेरा टाइम पीरियड है उसमें लगा के वो मुझे अलॉन्ग विद दी ओरिजिन और अलॉन्ग विद दी रिटर्न मुझे ये फाइल करना है अंडर सेक्शन 139(8)A। तो 139(8)A में मुझे ये प्रोविजन इस तरह से करके इसको फाइल करना है। दिस इज कॉल्ड एन अपडेटेड रिटर्न। ठीक है सर, ये पूरा मैंने आपको अपडेटेड रिटर्न के बारे में बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, वो एक जन लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मींस असेसमेंट ईयर 2020-21 रिटर्न्स कैन बी फाइल्ड। सर जैसे ही आपका ये प्रोविजन इन्वोक हो जाएगा, प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, 21 मार्च के बाद जैसे ये बजट जो है एक्ट बन जाएगा, तो जो रिटर्नों का फॉर्मेट आ जाएगा और आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। असेसमेंट ईयर 20-21 का तो नहीं हो पाएगा ना सर? हमको लगता है क्यों नहीं हो पाएगा सर? के लिए सर क्यों नहीं हो पाएगा सर? 2 इयर्स बैक तक का बोल रहे हैं तो सर। असेसमेंट ईयर 20-21 का कब तक फाइल कर सकते हैं? 2 इयर्स, 23 तक फाइल हो सकता है सर। तो प्रोसीजर आ जाएगा तो आप सारे सालों का कर सकते हैं, बट 50% लगेगा टैक्स। एडिशनल टैक्स इज 50%। बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, चले आगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट there is an amendment in the TDS chapter. So 194IA. 194IA किसके लिए होता है सर? If any person have bought any other immovable property or building attached with an immovable property exceeding rupees 50 lakh rupees, then the person is under an obligation to withhold tax at the rate of 1%. So 50 लाख से ज्यादा कोई भी immovable property या बिल्डिंग खरीदोगे तो उसके ऊपर आपको कितना TDS काटना था? 1%. 1% of the consideration amount paid. So what will happen if the
value of consideration is 70 lakhs, but the circle duty is, the stamp duty value is 80 lakhs. So under 194 IA, we deduct 1% of the consideration price, which is 70 lakhs, not the stamp duty value. However, 50C में हम क्या करते थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करते थे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर टैक्स देते थे, जो भी करते थे. अब उन्होंने यहाँ पे 194 IA में कहा 1% of the value of consideration or stamp duty value whichever is higher. So जो भी ज्यादा है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, 1% का TDS डिडक्ट करना पड़ेगा. अगर 70 लाख की कंसिडरेशन है और 80 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो 1% of 80 lakhs to be deducted. Similarly, for checking the limit of 50 lakh rupees, you have to see value of consideration or stamp duty value whichever is higher. So मान लीजिए value of consideration 48 lakhs है, but stamp duty value 52 lakhs है, तो आपको 52 lakhs के ऊपर 1% का TDS काटना पड़ेगा. So that is the provision that they have incorporated under section 194 IA. अब विकास जी आप सोच रहे होंगे कि सर ये गलत सा हो गया. मान लीजिए वैल्यू 70 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75 लाख है, और हमें मालूम है 50C में और 43CA में लिखा हुआ है कि अगर there is a difference between the stamp duty value and the consideration price, the stamp duty value, if it is within 110% of the consideration price, then consideration price is deemed to be the stamp duty value. तो 10% का मुझे अलाउड है. तो क्या वो सेम यहाँ पे भी 194 IA में अलाउ होगा? आंसर इज नो. सो अगर आपकी कंसिडरेशन प्राइस 70 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75 लाख है, तो 1% आपको 75 लाख पे काटना है, चाहे 50C या 43CA जो सेक्शन है हमारा, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 70 लाख ही है, क्योंकि वो 10% के अंदर है, तो भी आपको TDS जो है पूरे 75 पे काटना पड़ेगा. दिस इज एन मिसमैच. अब मान लीजिए प्रतीक जी आपने कोई फ्लैट बुक कराया 8 साल पहले और आपने वहां पे 20% या 10% या 5% पेमेंट दे दी. ऑन दैट डे यू हैव बुक्ड दैट फ्लैट एट 60 lakhs and the stamp duty value is only 50 lakhs. But after 8 years now you are going for the registry and the stamp duty value as on date is 90 lakhs. हो सकता है सर. अब आपको फ्लैट तैयार मिला है, फ्लैट आपको DLF वाला फ्लैट दे रहा है, तो हमारे यहाँ 50C में और 40CA में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टू बी टेकन ऑन द डे इफ द पार्ट पेमेंट इज मेड एंड द एग्रीमेंट फॉर द एग्रीमेंट हैव बीन एंटर्ड. तो जिस भी दिन आपने एग्रीमेंट हुआ उस दिन की लेंगे. उस दिन कब की थी? 50 लाख थी. बट आज जो है मेरी 90 लाख है. TDS कितने पे कटेगा? 50 लाख पे या 90 लाख पे? सॉरी 60 लाख पे या 90 लाख पे? कंसिडरेशन वैल्यू इज 60 लाख. तो 90 पे काटोगे या 60 पे काटोगे सर? सर 60 पे कटना चाहिए सर. 60 पे कटना चाहिए हैं? 90 पे 90 पे कटना चाहिए, मुझे भी नहीं पता. Because they have not returned that stamp duty value of which date. But by taking the beneficial both the provision together, I may assume that stamp duty value should be taken from 50C or 43 section, and that stamp duty value may be taken of a previous date. तो मैं कहूंगा 50 लाख और एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख, whichever is higher, तो 60 लाख पे काटेंगे, 90 पे नहीं काटना. However, कुछ लोग इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट लॉ का इंटेंशन ऐसा नहीं है. तो 110% वाला तो एक इंपॉर्टेंट मिसमैच है, बट यहाँ पे एक और मिसमैच, प्रोबेबल मिसमैच आएगा. तो पोस्ट बजट मेमोरेंडम में इंस्टीट्यूट ने आई थिंक ये डाल दिया है या डाल देगा, और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट जो भी मूव करनी होगी, दैट अमेंडमेंट माइट बी कमिंग इन दी एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ दिस फाइनेंस बिल. ये क्लियर हो गया सर? चलें सर आगे चलते हैं. There is a new section called 194R which have been incorporated. So प्रतीक जी, अगर मेरे एक क्लाइंट का धनबाद में केस लगा हुआ है और आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मुझे वो कोई भी बेनिफिट दिया, कोई भी परक्विजिट दिया, आपने वो केस फ्री में कर दिया, या आपने उसके बदले मुझे कोई गिफ्ट दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, which is chargeable to tax in my hands under section 28(4). क्योंकि मैं भी आपसे ये जो सर्विसेज ले रहा हूं ये इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ही ले रहा हूं.
provided the value of services exceeds rupees 20,000 rupees. तो आप वो असेसमेंट कराने के 10,000 रुपए ही लेते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप वो असेसमेंट कराने के 25,000 रुपए लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू विदहोल्ड टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. सर्विस आपने फ्री में दी है, ठीक है सर, मेरे को फ्री में सर्विस दी, बट टीडीएस आपको काटना है 10% का, या तो मेरे से रिकवर कर लेना, नहीं तो अपनी जेब से जमा करना. So during the course of business or profession, if somebody have extended any kind of a benefit or perquisite to any person doing that business, आपने अपने रिटेलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट परक्विजिट दिया, आपने उनको फ्री सिंगापुर ट्रिप दे दिया या फ्री बैंकॉक घुमाने ले गए, तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ उन सब एक्सपेंडिचर का 10% विथहोल्डिंग टैक्स आपको सरकार को जमा कराना है अंडर सेक्शन 194R. Either the amount has to be deposited from your own pocket or you have to recover this amount from the distributor or the dealer, etc., etc. So अगर आप मेरी अपील फ्री में करोगे या मेरा केस फ्री में करोगे तो पहले मेरे से टीडीएस के पैसे मांग लेना कि सर पहले 10% भेजो, मेरी फीस 50,000 रुपए है, 5,000 रुपए टीडीएस के भेजो, तब मैं फ्री में करूंगा काम. ठीक है सर. एंड देन जैसे ही वो मेरे अकाउंट में टीडीएस आ गया तो मुझे वो इनकम अपनी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज एन बेनिफिट विच आई हैव अकर्ड in my normal course, in my business course or in the course of business or profession from you. तो ये एक तरह से उन्होंने चेकिंग का एक नया सेक्शन 194R डाला, प्रोवाइडेड 20,000 से ज्यादा. सो दिवाली पे अगर आप मेरे को गिफ्ट भेजोगे या कोई भी कंपनी गिफ्ट देगी तो 20,000 से कम का देना. 20,000 से ज्यादा का दोगे तो साथ में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट दे हैव सेड अंडर दिस न्यू प्रोविजन ऑफ 194R. एम आई क्लियर? सर इसमें जो है 194R में जो मैं टीडीएस काटूंगा तो मैं जिसको गिफ्ट दिया हूं क्या उसके पेन में वो रुपया जमा करूंगा? और क्या सर, टीडीएस काट के उसके पेन पे जाएंगे ना, उसके पेन में जाएंगे तो उससे सर इसमें क्या एक गैप लग रहा है कि अब हम लोग को ये वैल्यू एसेस करना पड़ेगा कि कितना का वो सर्विस है, क्योंकि सर्विस का तो जैसे वैल्यूएशन इश्यूज तो रहेंगे ही ना सर. आपको जी मैंने तो सर्विस जो दी है वो 15,000 की दी है, 15,000 की थी. हाँ, लेकिन अगर आपने मेरी टिकट बुक करा दी, हाँ, उसकी जहाँ आपने मेरी फैमिली को सिंगापुर भेज दिया, फिर तो एक्सपेंडिचर है ना. आपने मेरे को जो है मैं आप मान लीजिए यू आर एलजी और आपने मेरे को एक मोटरसाइकिल भेज दी, आपने मेरे को फ्रिज भेज दिया, घर के पर्सनल यूज के लिए कोई और चीज दे दी, घड़ी दे दी, तो वो सर की वैल्यू तो आपको पता ही है ना. तो उसके ऊपर अब आपको 10% काट के देना है टैक्स. 2-3 क्वेश्चंस इसी पॉइंट्स पे कुछ आया है, वो जो न्यू रिटर्न है उससे रिलेटेड कि विल सेल्फ असेसमेंट टैक्स बी डिडक्टेड इन अपडेटेड रिटर्न? यस. और किसी भी तरह का कोई टैक्स हो. हाँ, व्हाट अबाउट 87A ट्रीटमेंट? वो भी मिलेगा आपको. रिलीफ अंडर 87 इज आल्सो अलाउड. अच्छा, एक है 234F लेट फीस. तो लेट फी नहीं लगेगी. ओल्ड एसेट का क्या होगा अंडर सेक्शन 194IA? ओल्ड एसेट मतलब सर वो तो मैंने बता ही दिया ना कि पुराना सर्कल रेट ले सकते हैं हम. अच्छा, वही आई थिंक वही होगा ओल्ड एसेट का मतलब. इतना ही लिखा हुआ है सर, ओल्ड एसेट्स का क्या होगा अंडर सेक्शन 194IA? क्लैरिफिकेशन कर दीजिए सर, जो भी देख रहा है उसको ओल्ड एसेट को एक बार क्लैरिफाई करके दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए. ठीक है सर. और बताएं सर. बस सर, आगे बढ़ते हैं सर. चलिए सर, अब इसके बाद मैं आपको 3 चीजें और बताने जा रहा हूं विच इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. सर पहली अमेंडमेंट आई इन रिलेशन टू मर्जर एंड डीमर्जर्स. सर ये हमारे अमेंडमेंट उन्होंने डाला 170 क्लॉज और सबसेक्शन 2 कैपिटल A और एक उन्होंने 170A, ये 2 सेक्शन डाले. ये क्या है सर? आज हम मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी मर्ज होना चाहती है. सो देयर इज कंपनी A एंड देयर इज कंपनी B. कंपनी A वांट्स टू मर्ज विद कंपनी B और कंपनी A एंड B वांट टू मर्ज इनटू अ न्यू कंपनी कॉल्ड AB. सो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको एनसीएलटी के पास अप्लाई करते हैं विद अ रिकॉर्ड डेट कि किस डेट से मर्जर चाहते हैं.
NCLT took 6 months, 1 year, 2 year, 3 year time to actually pass the order for merger, either approving or rejecting. Reject हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर अप्रूव हो गया तो अप्रूव होता है रिकॉर्ड डेट से, अपॉइंटेड डेट से जो है अप्रूव होता है, बट अप्रूव होने में 2 साल 3 साल लग जाता है। मान लीजिए कंपनी ए थी, उसकी असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी, और जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उससे पहले जो है मर्जर का ऑर्डर आ चुका, मान लीजिए 1 दिन पहले आ गया, 1 हफ्ते पहले आ गया, या 1 महीने पहले आ गया, और जो ऑर्डर पास हुआ असेसमेंट ऑर्डर वो किसके नाम पे पास हो गया? ए के नाम पे हो गया। उस दिन ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ए इज एन नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी। और अभी अभी आज भी जो है रूलिंग आई है हाई कोर्ट की, उसमें ये कहा गया दैट असेसमेंट ऑर्डर पास्ड इन द नेम ऑफ अ डेड पर्सन इज वॉइड। You cannot pass an assessment order in the name of a non-existent entity or a dead person. So we have huge Supreme Court ruling, High Court rulings in this favor. But अब इनकम टैक्स को तो उन्होंने कहा भी एक ही असेसमेंट तो होनी चाहिए, तो अब उन्होंने ये सेक्शन डाला 172A। 172A में उन्होंने कहा कि that if there is a difference between the appointed date or record date and the date of order, and any order which have been passed in the name of predecessor company, like A के नाम पे अगर कोई पास हो गया, that is deemed to be passed in the name of successor company। जैसे ही ये हो जाएगा तो जो उनके ऑर्डर्स है वो क्या हो जाएंगे? सारे वैलिड ऑर्डर्स हो जाएंगे। So this is the first amendment what they have proposed in case of mergers. Second, they said that there is a difference between the appointed date and the date of order by the NCLT in case of mergers, demergers और reorganization। जैसे ही ऑर्डर आता है तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से हमें मर्जर या डीमर्जर का इफेक्ट देना पड़ता है, रिटर्न कंसोलिडेट करनी पड़ती है, बट जो टीडीएस है वो अलग अलग पैन पे जमा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अलग अलग पैन पे जमा है, और एडवांस टैक्स भी अलग अलग पैन पे जमा है, तो पैन का क्रेडिट देने में दिक्कत आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत। They have said a new return is to be filed which is called as modified return, that in case of a reorganization, either merger, demerger or any other reorganization, the assessee, the surviving entity has to file a modified return in the prescribed form and in the prescribed manner within 6 months from the end of the month in which such order is passed। तो जिस भी दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो भी सर्वाइविंग एंटिटी है उसको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है, which will be filed in a separate form and in a separate manner। वो आपको फाइल करके अपने पूरे सालों का जो 2, 3, 4 साल जितने का भी टाइम होगा उसकी जो जो चीजें चेंज करनी है वो सब चीजें आपको चेंज करने का एक हमने प्रोसीजर दे दिया। सो दिस इज द important amendment with respect to mergers, demergers and any reorganization in case of companies. Third, IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. Sir, Insolvency and Bankruptcy Code में when the application is being admitted in the NCLT, all the liabilities of the income tax department also ceases to exist and become the part of COC. So वो COC का पार्ट हो जाती है, लाइबिलिटी का पार्ट हो जाती है, और उसके बाद जब वो रिजोल्यूशन होता है उसका, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं भी मिलता। सो वो जब नई रेजोल्यूशन होने के बाद जब कंपनी दूसरे के हाथ में चली जाती है, तो इन दो केसेस या लिक्विडेशन में चली जाती है, तो लिक्विडेटर के हाथ में whatever is the liability on the company that become non recoverable or has to be nil। बट AO के पास कोई पावर नहीं है जिसमें वो नील कर सके। So he have no power whereby he can give effect of this NCLT order। Now a new section have been incorporated under section 156A capital A, और उसमें कहा गया कि अगर कोई IBC की कोई कंपनी है और NCLT के ऑर्डर के कारण जो डिमांड है वो कम हो गई या जीरो हो गई, जो भी हो गया, now AO can reduce that amount and pass a modified notice of demand under section 156 capital A। तो ये 156A में उसको क्या कर रहेगा, वो एक मॉडिफाइड ऑर्डर ऑफ डिमांड आपको देगा। सो दिस इज अ न्यू प्रोविजन। 3 प्रोसीजरल अमेंडमेंट जो है आपको दी गई, ये तीनों को आप देख सकते हैं, आपके जिन जिन केसों में ये अप्लाई होगी
वो सब चीजें आप कर सकते हैं. I think these are all major amendments which is being proposed. तो कोई और एक आध कोई छोटी मोटी रह गई हो, if you want to ask me, you can ask. और कोई रह गई? और एक मेजर अमेंडमेंट रह गई सर, 148. सर 148 के केस में जो है 148 में there earlier provision says that they can do a 148 beyond 3 years up to 10 years if there is an income which has been escaped assessment if that amount exceeds 50 lakh rupees which is represented by an asset. So अगर 3 साल से बाद मुझे 148 करना है और up to 10 years तक मुझे 148 करना है, तो there has to be an income in the view of the AO that amount to be more than 50 lakhs which is represented by an asset. So मैंने कोई घर खरीदा था 6 साल पहले 50 लाख से ज्यादा था, तो it is represented by an asset. मेरे पास कोई FD है, मेरे पास कैश है, मेरे पास गोल्ड है which is represented by an asset. However, अगर मान लीजिए मैंने खर्चा कर दिया तो क्या होगा? So now they have added an income which have escaped assessment exceeding rupees 50 lakhs which is represented by an asset, or it represents by a way of an expense on an event or occasion, or it is recorded in the books of accounts as entry. So all kind of loan entries or any other share application money entries etc. if it is there, so पहले लोग कह रहे थे कि 3 साल के beyond जो है वो सब खत्म हो गया. नहीं, even up to after 3 years up to 10 years अगर वो entries भी हैं और वो entries 50 लाख से ज्यादा की हैं, so then also 148 can be made. Similarly, in case of such cases also the block assessment can be made for 10 years. So ये भी उन्होंने दे दिया. Faceless में there is one amendment. Now opportunity of being heard by way of a virtual hearing will also be allowed under faceless regime or faceless assessment. तो आपको अब hearing का time virtual hearing वहां पे भी faceless में भी मिलेगी. So that they have already proposed. तो ये दो amendment जो है faceless और 148 की important थी, तो मैंने कहा आपको बता दी. Any other sir point, any other amendment, any other question that you have? Otherwise, thank you very much from my side. सर और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है सर अभी. सर ये डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स ड्यूज ऑफ पास्ट ईयर्स. Sir, वो director liability in case of a private limited company is always there. बस सर इसको छोड़ के और सर क्वेश्चंस नहीं है. तो सर now we will be moving ahead for the vote of thanks. And sir, I would like to say that we have 944 audience watching this program, participants. So I think since we have organized this program on pan Jharkhand basis, but participants are present from all over India. And so this is just because of the good speakers that the participants in this huge number come. And we really wanted to conduct this program with good faculties like you and like Manojji, which were present in the first session. And I'm very sure that all the participants today have taken away a lot of learning from this session. And as said by the chairman of Indirect Tax Committee and Direct Tax Committee, that this program is organized after a gap of 19 days from the date of the budget is presented, so that we can have a good clarity of the budget, as in details we were now able to expand, or we can able to discuss all the provisions in such a detailed manner. So sir, thank you for giving your time for making this program great successful, sir. I thank Jamshedpur branch chairman Vikas Agarwal ji, or Ranchi branch chairman Praveen ji,
and all the committees member of all the three branches, the direct tax committee, indirect tax committees, secretary, chairman, and all the persons, technical persons present behind the screen, and all the participants who have been giving their time from 11 a.m. to 2 p.m. They have been continuously watching this program. Thank you, everyone. This motivate us for organizing these types of program again and again. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your wonderful deliberation. Thank you, Vikas ji. Thank you, Prateek ji. Sir.